And here we are for the second leg of the Kingdom Valley National T20, the first game at the Multan Cricket Stadium, and it's going to be Sindh versus Northern. The teams arrived. It's a warm, hot morning. Well, I got the hot morning. Umar Amin will be looking to get some more points on the scoreboard, on the points table, and Sindh on the other hand would like to continue on the winning streak because they started off well, then they lost their way, but finished off with a win in the last game at the Rawalpindi Stadium. There's the points table and the standings over here. Khyber Pakhtunkhwa 5 out of 5. Sindh Z played 6 games and they've won 3 of them. Northern will have to pick the game up. They won 2 out of 5 and they can always come up in the order if they win tonight. Shah Faisal and get the news on the pitch. Second leg of Kingdom Valley National T20 Cup, and we are here in Multan, the city of saints. It's a hot morning here. The temperature at the moment is 33 degrees and the humidity 52%, and it's quite sultry here as well. Expect the temperatures to go up during the day. About the 22 yards here. It's pretty dry. It's got plenty of straw-colored grass on it, which won't have any impact. The surface looks pretty hard and dry. It'll be interesting to see what the skippers will do here, because chasing has been a problem in this tournament, but this wicket would suggest that it's going to remain the same for the entire 40 overs. And that was the pitch from Shah Faisal, just letting us know what we are going to see over here for the next 40 overs. And now let's join Ali Yunus with the 2 captains for the all-important toss. Game number 1 of Multan leg brings 2 very exciting teams up against each other. It's Sindh taking on Northern for the 17th game of Kingdom Valley National T20 Cup. I've got the 2 captains, Saud Shakil for Sindh, Umar Amin for Northern, and Iftikhar Ahmed is the match referee. Seems like Umar Amin is going to flip the coin. Let's do it. Tails. Tails is the call. Tails it is. Saud Shakil, क्या करेंगे और क्यों? हाँ, हम लोग पहले बॉलिंग कर रहे हैं आज. क्या खास वजह लग रही है? कंडीशंस चेंज हैं, पिच कैसा देख रहे हैं? पिच तो अभी जब मैच शुरू होगा फिर ही एसेस कर पाएंगे. लग तो अच्छा आ रहा है बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी. थोड़ा हो सकता है मॉइस्चर हो, अर्ली ऑन स्टार्ट है, तो ये कि अच्छे कम से कम पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे. लास्ट मैच आप बड़ा कंफर्टेबली जीत गए थे, तो आप चाहेंगे कि ऐसी ही परफॉर्मेंस रिपीट की जाए? ऑब्वियसली एज अ कैप्टन तो बंदा यही सोचता है कि इतना कंफर्टेबली जीते. राइट, तो टीम न्यूज़ आपकी क्या है? 2 चेंजेस हैं आज. फराज अली आए हैं और जाहिद महमूद आपसी टीम में है. राइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. उमर अमीन डिसअपॉइंटेड है, टॉस हार गए? नहीं, हमारा भी प्लान यही था पहले बैटिंग का. और आखिरी मैच आप ऑल्दो जीत गए, लेकिन स्टिल एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं टॉप 3 में. जी बिल्कुल, टॉप 3 में बैटिंग में भी और फिर बॉलिंग में भी हमारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, तो कोशिश करेंगे कि इस मैच में वो गलतियां ना करें जो पिछले मैच में हुई हैं. राइट, और टीम न्यूज़ आपकी? हमारी एक चेंज है, हसन नवाज की जगह हुरैरा खेल रहे. राइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Right, the news from the centre is that Sindh has won the toss and decided to bowl first. Let's have a look at the 2 teams for the day. Sindh making changes and so did Northern. And you can see a bit surprising out there. You see that Hassan Nawaz, unless he's injured, he's not in the side, and they've given Huraira the opportunity. Sindh have made a couple of changes. Good to see Zahid Mahmood back in the 11, and they've also included 1 batsman, left-handed Faraz Ali. So all set out here for game 17 of the Kingdom Valley National T20, and then the first game here in Multan. Just to tell our viewers that this Multan leg will have first 2 days of day games. And then once the Asia Cup is done, then the games go into day-night mode, where we'll have a first game at around
3 o'clock in the afternoon, second one at 7:30. So we'll have to gear ourselves for some matches under floodlights. But here, early start, as Saud Shakil said, that he is looking to gain some advantage of the moisture, but it was very a different kind of an approach from the captain, saying that it looks good for bowling and looks good for batting. So I think team wants to assess how the pitch is going to play, because it's just their first game. Ali Yunus is rapid. He's just rushed up and he's joined us. So just bear with him if he's running out of breath. But here we are. Yeah, good toss to win for Sindh. They decided to bowl first, playing on their strength. They've chased down good totals here in this tournament. It's match number 17. Live from Multan Cricket Stadium, as umpire said, let's play. Don't remember when I saw Anwar Ali opening the bowling last. Both these teams are coming on the back of a win. Northern won their last, Sindh won their last game, which was the final game in the Pindi leg. It was a good win for them just to keep them in the race. Now every game is very, very important. Well, games are all important, but since you've come halfway through the tournament, now you cannot just keep right word for it, experimenting. You need to find your best 11 according to the conditions, yes? Some problem with the side screen, so just sorting that out. Hurera and Nasir Nawaz have opened for Northern today. Interesting changes for Sindra. The two of them. Saad Khan, he's missing out in this game. So did Mir Hamza. Zahid Mahmood coming back. So is Faraz Ali, a very talented left-hand batter he is also. And Northern looking to put some stability up the order. They brought in young Hurera, scored 1,000 runs in his first season. He will definitely give a lot of stability up the order, which was missing in Northern early in the Pindi leg. Starts off with a boundary. Multan gets their first runs in the national T20 with that 4. That's the problem. Anwar Ali doesn't have much pace with him, and if he ball outside the off stump, and a talented player like Hurera is not going to miss out on that. Have a look at that. Outside the off stump, no swing, easy length, placed it beautifully. That's a brilliant start to his national T20. He was on the bench for most of the time in Pindi, but now he's got to make most of these conditions. Young Hurera given the opportunity to open the inning. I'm not sure about the change that Northern have made in this match. They've dropped Hassan Nawaz. He looked a very exciting prospect, a very hard-hitting player. They brought in Hurera in place of him. That's the schedule for the Multan Cricket Stadium. Start off with Northern and Sindh, and to follow the match between Balochistan and Central Punjab, the second game of the day. And after tomorrow, it will be 2 games, but it starts late in the afternoon. Picks this one up nicely. It was too full. A button bounce into the fence. No pace, and if you ball on the legs of somebody like Hurera, like it did the previous delivery, this time onto his leg stump, easy pickings. There was a fielder at square leg, but he placed it away from him for the second boundary of the over. Sindh opting for another extra spinner. No Sohail Khan, no Mir Hamza. And we will have to do a lot of work today. Oh, that's fine, very fine. This will run away for 4. Yes, it does. Although it wasn't the comfortable shot from Hurera, but it will give him 4 runs. There was no slip. He's off to a flyer. 12 runs already in the first over. That's a good start from him.
Good single to end the over. Takes Northern to 13 of the first over here in Multan. Let's have a look at tournament so far for Northern. It's been mixed. They lost the game against Sindh, then they lost to Khyber Pakhtunkhwa, then they beat Central Punjab, they lost to Balochistan, and in the last game they won against Southern Punjab. So that will definitely give them some momentum coming here at Multan. Northern seems to have taken a liking towards Punjab. The only two games they won, one against Central, one against Southern. Abrar Ahmed, he's an exciting prospect for Sindh. Yeah, whenever he comes, I'm pretty sure the South Shakil also feels that he's my wicket taker and he's going to purchase something. So give him the power play. Good shot, inside out. Yeah, just too full. You know, the margin of errors in this format, very, very thin. And especially in the power play when the batsman is having a big heart, knowing only two fielders are outside the circle. All he needs to do is just clear the 30 yard. This boy is very talented. This is the third comfortable shot and three different areas that he has chosen to hit. This time over extra cover. So that shows he's got variety of shots under him. Very exciting prospect. More runs, this time short. It's been put away for another boundary of the back foot. That is fantastic cricket. Brilliant by Herrera. We've seen 4 boundaries, in fact 5. One was a thick outside edge, but 4 boundaries. Very neat, very clean. Placement is perfect. If you're not spinning it, it's going to be trouble, and we already see Sindh struggling. Catch it is the call, but Anwar is too far deep. Yeah, it's surprising for Sindh, just going for one proper fast bowler. That is Asif Mahmood, is a youngster. This is his second game. They dropped this 2 main fast bowlers, Sohail Khan and Mir Hamza. It's a tough one, dropping those 2. Again goes through point and cover. Again that length and the pace on the ball. Seems like an excellent pitch. The ball is coming nicely onto the bat. And you can tell by the shots that we have seen already, and we're just into the second over of the day. Have a look at that. This time it's Nasir Nawaz learning from young Herrera. And I tell you, if you stay on this pitch, you've got lots of runs available. I can tell. शाबाश 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 want to go Dot ball, rare one. वाह 27 for no loss. T20 क्रिकेट हो रही है, कोई सेकंड 11 थोड़ी हो रही है जो आगे बैट्समैन रोकेगा। 3 बैट बॉलें कर दो मेरी जान, तीनों बैट बॉलें। क्या हो रहा है रेहान? ये बोल रहा है, शाहिद बोल रहा है, नीचे कमेंट नहीं आ रही। This is a very good start by Northern. Especially this lad on your screen, Herrera. Scored 300 in the previous 4-day cricket tournament. 1,000 runs in his first debut season. That is excellent. That is some potential. Now we see the change in bowling. Anwar Ali just bowled for 1 over, and Asif Mahmood
26 year of age. He's made debut in the last game, got 1 wicket, bowled really well though. Slight misfield. Just a bit casual there, Anwar Ali. Very rare from him. I think they've just been taken a bit by surprise, Sindh. Suddenly, Northern starting off with almost 13 and over. No body behind that. Just took his eyes off Anwar Ali. That's not what you expect from a seasoned campaigner like him. Nice. Nice. Just over. Just over the field at mid-on. And that's 4. Taller guy might have made it. But that was Danish Aziz. Just over his head. And we'll look at that. Not quite exactly where he wanted to, but just over his head. That is disappointment for Asim Mahmood, and rightly so. They're looking for that early wicket, that first wicket, because this Northern is running away with the show. Oh, there are more runs here. That's not the line. Now this is just frustration from the bowler. First a misfield of his bowling, then probably a catch. Danish could have done better. Forces him to bowl a shorter one with no venom in it at all. That is batsmanship of the highest order. We're just into the 3rd over and we've seen so many classy shots by this young man. Off the front foot, off the back foot, towards onside. Even the edges are carrying, but this one was not an edge, definitely. That was placed beautifully. They're off to a great start. Yeah, this is something that was missing in that Rawalpindi leg from Northern side. The stability up the order. That is why they have brought in Mohammad Herrera. And look at that, he's playing a magnificent inning. 30 runs of just 13 balls. Although he's not known for his T20 abilities, but he's proving everyone wrong. Already 7 boundaries to his name. That is a fantastic start. Nice, good single there. You can understand the way they are scoring these two. Just 3 dot balls in the 2.5 over, so they're making full use of the power play. 7 boundaries already. Actually 8 boundaries. 7 for Herrera, 1 for Nasir. 31 of just 14. So just 3 dot balls. This is a rarity. We've not seen that happening in the Pindi leg. So now the teams who are going to play tomorrow or in the second game are watching what this pitch is capable of, and positivity will always help. The attack has been taken to the opposition for sure. 38 for no loss after 3. तुम पहले से तो भागो, तुम खड़े वो पहले से निकलो, इतना आए खड़ा हुआ था, कैच था वो। हाँ भाई, ओ Change of ends for Anwar Ali. Gave away 13 runs in his first over. Since searching for that first wicket, because they won the toss, opted to bowl first. And if you don't get early wickets, you put lots of pressure on yourself. Well, in my opinion, they just played on their strength, because their strength has been batting and chasing down. Because this is such a beautiful pitch. You could have batted first and got runs. देखना देखना नहीं 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 एक विकेट की बात है, एक विकेट की बात है।
That was a great effort. No doubt about that. Zahid Mahmood there. But when you're looking for those early wickets and when you're struggling, you need to make those half chances into full ones. Have a look at that. Oh, this level. And when you're struggling, yeah, you would say it's a drop chance. But it was a great effort though. No doubt about that. 40 runs already on the board. 3.2 overs. Troubles for Sindh. Nasir Nawaz has been given the opportunity, and let's have a look at that opportunity they had. Oh, great effort, no doubt whatsoever. But the situation Sindh are in, they got to take all those half chances even to make a comeback in this game, because Northern are off to a great start. Nasir Nawaz given preference over Hassan. Strange decision, in my opinion. No swing. We haven't seen it yet for both fast bowlers. Anwar Ali, medium pacer. If he doesn't swing, it gets way too easy for the batters to get him away. On the other hand, it's Asif Mahmood, and that's that opportunity. For Sindh, this should have stuck in his hands. Shazil Khan there. He found some form in the last game that they played in Rawalpindi, and this pitch definitely will suit his style of batting, because ball is coming nicely onto the bat. No swing, it's just proper cricket and you'll get runs. Slower one. Good over this. Just pulling things back a little bit. 43 for no loss. दोनों टीमों में एक एक तब्दीली की गई है। मोहम्मद हुरैरा को आज मौका मिला है, इस बार ज़्यादा दूर से खेलने के लिए चले गए। आसिफ महमूद ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पहले ओवर में 11 रन दिए, उसके बाद अच्छा कमबैक किया था। आसिफ महमूद नए बॉलर हैं, खासे कदावर हैं, बाउंस मिलता है ऑफ द विकेट, और जिस लेंथ को ये हिट कर रहे हैं इस लाइन से, ये एक फील्डर को स्लिप में भी इस मरहले पर लिया जा सकता है। यहाँ जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन पिक कर लिया था। मिड विकेट पर अहमद मौजूद थे। तो मरीना इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। नॉर्दर्न की टीम खुश होगी, टॉस हारने के बाद भी इस सूरत हाल से 44 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और अभी पावर प्ले में 10 गेंदें बाकी हैं। बहुत अच्छा आगाज किया नॉर्दर्न ने, और जैसे टॉस पे उमर अमीन ने ये बात की थी कि टॉस जीत के वो बैटिंग करना चाह रहे थे, तो दोनों टीमें खुश हैं।
अच्छी क्रिकेट खेली है। हुरैरा ने भी जिस तरह की इनिंग्स खेली है बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, जो भी लूज डिलीवरी थी अच्छा अटैक किए दोनों ने और सिंध को पहले ही शुरू में ही बैकफुट पे भेज दिया। ये दोनों टीमें जब रावलपिंडी में खेली थी तो नॉर्दर्न ने सिंध के खिलाफ पहले बॉलिंग की थी और सिंध ने उस मैच में 190 रन बनाए थे। आज मामला उसके बरक्स शुरू हुआ है, क्योंकि इस पोजीशन से ये भी बड़ा स्कोर बना सकते हैं। नॉर्दर्न की बैटिंग में हमने देखा कि डेप्थ है इनके पास, खासतौर पर डेथ ओवर्स में ऐसे हिटर्स हैं जो पांसा पलट सकते हैं। आमिर जमाल बहुत अच्छी हिटिंग फॉर्म में रहे हैं। जीशान मलिक एक बड़े बासलाहियत बैट्समैन है, वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे। उमर अमीन फॉर्म में जो कप्तान है। एक और खराब गेंद, 4 रन का और इजाफा। गेंद फाइन लेग से भी फाइन चली गई। नॉर्दर्न के 50 रन मुकम्मल हो गए 5वें ओवर से भी पहले। सिंध ने बिल्कुल भी अच्छा आगाज नहीं किया, लाइन लेंथ अच्छी नहीं थी। स्पिनर्स ने भी काफ़ी लूज डिलीवरीज दी जिनका भरपूर फ़ायदा उठाया। और आगाज़ नॉर्दर्न की बात की जाए, नॉर्दर्न की बैटिंग में आगाज़ जो है वहाँ पे कमी नज़र आ रही थी, लेकिन आज जिस तरह की चेंजेस इन्होंने की हैं और जिस तरह की फॉर्म में हुरैरा लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। कुछ ज़्यादा स्लॉगिंग नज़र नहीं आई, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने में नज़र आई। उमर अमीन की टीम में आने के बाद ये टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगी है, क्योंकि कप्तान की ज़रूरत थी। इब्तदाई मैचों में बहुत इनकी कमी महसूस की गई थी। और शानदार शॉट, इस बार पंच किया इससे बैकफुट से 4 रन के लिए। एक और महंगा ओवर आसिफ महमूद का, इसमें भी 11 रन बने। 54 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। यार थोड़ी हिम्मत तो पकड़, बोल तो मैं सर्किल में बॉल करूंगा यार। हिम्मत तो पकड़ थोड़ी, सर्किल में बॉल करने की ऐसे थोड़ी ना दिया यार। सर्किल में तो बॉल तो कर, तू उसको बोल कर, वो बोल रहा है जरूरत पड़ी तो थोड़ी जरूरत है ना, तुमको बोल उसको बोल, वो तो बोल रहा गाइड मना कर रहा बॉल में, उसको बोल तो ऐसे नहीं चलेगा। जाओ थोड़ा सीधा हो जा, नहीं जा रहा हूं। अबरार अहमद पवेलियन से शजू बहुत आला। अभी तक सिंध के बॉलर्स के लिए ये खासी मुश्किल सुबह साबित हुई है। उन्होंने बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल्स यहाँ पर कंसीड की हैं। 10 चौके लग चुके हैं। अभी ये मुश्किल 6ठा ओवर शुरू हुआ है। इससे अंदाजा किया इसका है कितनी बालादस्ती है इस मरहले पर हुरैरा की। देखना सिर्फ दोनों बड़ी शॉट देख रहे हैं बस, बहुत कमाल बैटिंग कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा, क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, ये भी देखें। हवा में थे जब शॉट खेली है, अच्छा बाउंस मिला था, लेकिन टॉप ऑफ द बाउंस आके इन्होंने एक शानदार शॉट खेली। और ये फायदा जरूर है क्योंकि क्लियर ऑफ माइंड है जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी सरफेस नजर आ रही है, अच्छा टाइम हो रहा है गेंद। सही है, बहुत अच्छे। जहाँ ये बैटिंग पिच जो है ये बड़ी लाजवाब रही है अब तक। आप बैकफुट से भी अपने शॉट खेल सकते हैं, ऑन द ऑफ भी मौका है। बहुत आला, बिग शॉट कमिंग सीम मूवमेंट जिसकी तवक्को थी सिंध को मिली नहीं। तो स्पिनर्स की गेंद भी अभी तक बिल्कुल रुक के नहीं आई। साउथ आराम से, बहुत अच्छे। आखिरी अच्छा कर, आखिरी अच्छी अच्छा पिचेस कर। इस साल जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मौसम गर्मा में यहाँ पर व्हाइट बॉल सीरीज खेली गई थी, उसमें भी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में आए थे। बाबर आजम और शाही होप ने सेंचुरी बनाई थी। ये बेहतर ओवर अबरार अहमद का जिसमें उन्होंने खामोश रखा हुरैरा और नासिर को। 57 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं।
सिंध के दो एस बॉलर भी आज मौजूद नहीं है, सुहेल खान और मीर हमजा, और उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि दोनों बहुत अच्छी रिदम में थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे थे पिंडी लेग में, और यहाँ पे उनको रेस्ट कराने का मौका दिया गया है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पहले 4 ओवर में 4 बॉलर्स को इस्तेमाल कर लिया था कप्तान सऊद शकील ने। अब ये इनके 5वें स्पेशलिस्ट बॉलर जाहिद महमूद आ रहे हैं मीडिया सेंटर एंड से, और पहली गेंद पर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। ये बड़ा छक्का लगाकर नासिर ने उन्हें अपने कद का फायदा उठाया। जो ही गेंद को हवा दी, जाहिद महमूद ने पहले से तैयार खड़े थे, इसे फ्रंट फुट से हिट लगाने में कामयाब हुए। शानदार शॉट थी ये, और पहली गेंद है या आखिरी ये नहीं देखा, उनकी जोन में मिल गई थी, अच्छी शॉट मारी, और प्रेशर अब जाहिद महमूद पे, बहुत क्लियर इंटेंट है इनकी। जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दिया गया था रावलपिंडी में, जो आखिरी 2 मैचेस हुए इन्हें बेंच पर बैठकर देखना पड़े, लेकिन यहाँ शायद इस ख्याल से कि मुल्तान की पिच में मदद मौजूद होगी स्पिनर्स के लिए, इसलिए इजाफी स्पिनर टीम में शामिल किया सिंध ने, लेकिन अभी तक मदद मिली नहीं है बिल्कुल। ये अच्छा शॉट खेला, इस बार क्रीज से बाहर निकले और इनसाइड आउट खेल दिया। हालांकि फील्डिंग की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, इसके बावजूद बाउंड्री पाई हुरैरा ने, जो आई रुकने में नहीं आ रहे। दोनों बल्लेबाज आड़े हाथों ले रहे हैं जाहिद महमूद को। सऊद शकील एक्स्ट्रा कवर पे काफी आगे खड़े थे, जिसका भरपूर फायदा उठाया, अच्छा कदमों का इस्तेमाल, टाइम किया ये शॉट, सिर्फ ओवर हिट करने नहीं गए। थोड़ा पिच से दूर रह गए थे गेंद की, यहाँ दूसरा रन का मौका नहीं दिया। आसिफ महमूद ने अच्छी फील्डिंग आसिफ की। हुरैरा ने अच्छा फायदा उठाया। आज हसन नवाज क्योंकि जख्मी हैं, वो नहीं खेल रहे, तो इनको मौका मिला है, इन्होंने अपनी मौजूदगी साबित की है। नॉर्दर्न की टीम को एक और धचका लगा था, अली इमरान अनफिट हो गए थे पिंडी के मरहले में, शाबाश। तो ख्याल किया जा रहा है कि अगले चंद रोज में वो मुल्तान पहुंच जाएंगे और टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी इत्तला मिली है टीम ड्रेसिंग रूम के। मुश्किलात का सामना था, एज ए टीम भी उस तरह नजर नहीं आ रहे थे नॉर्दर्न, 2-3 अच्छे परफॉर्मेंस जरूर नजर आए, लेकिन ये एक अच्छा स्टार्ट है, एक डिफरेंट लुक नजर आ रही है, इंटेंशन डिफरेंट है नॉर्दर्न की। बैकफुट से बहुत अच्छा खेलते हैं हुरैरा, लेकिन ये बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं थी। अनवर अली जो है इससे फंबल हुआ और हुरैरा ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बड़ी शानदार इनिंग्स नौजवान ओपनिंग बैट्समैन की जानिब से, सिर्फ 24 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। पहली बार उनको हमने T20 क्रिकेट में इतना आला स्कोर बनाते हुए देखा है। पहली निस्फ सेंचुरी हुरैरा के करियर की, 10 चौकों और 208 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये स्कोर किया। 72 पर कोई विकेट नहीं। ये आप देख सकते हैं पावर प्ले का अहवाल, जिसमें हुरैरा ये वन मैन शो ही रहा और खासी जगह मिलती रही और बैकफुट पर स्पिनर्स को खेलते रहे, फास्ट बॉलर को ये सामने खेलते हुए बाल बाल बचे। 2 मौके ज़रूर मिले, लेकिन हुरैरा जो हैं उन्होंने इस पिच की हालत को और अपने जो बैटिंग फॉर्म है उसको कैश कराया अभी तक।
तो तीसरे स्पिनर आ गए प्ले में। ये 8वां ही ओवर है। डैनी बांध नहीं बेटा। दानिश शाबाश शाबाश अजीज शाबाश, टाइट टाइट जरा बेटा। पिंडी में बुझे रहे बॉलिंग और बैटिंग दोनों में, लेकिन नए शहर में आए हैं। शाबाश। यहाँ इनसे सिंध को खासी तवक्कात होंगी। 3 मैचेस अभी तक सिंध ने जीते, 3 में ही उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉर्दर्न, सिंध को जरूरत है, अशद जरूरत है कि कोई विकेट हासिल कर सके। दानिश अजीज उम्मीद तौर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कंटेन करते हैं रन्स को। ये जाने वाला बॉल। ये बार बार याद दहानी कराई जा रही है सरफराज की जानिब से कि विकेट के अंदर रखें, आउटसाइड ऑफ स्टंप जो भी गेंद आई है वो बाउंड्री के पार ही गई है। सही है शाबाश। करेगा देखना। गुलाम मुदस्सिर जो हैं वो कुमक के तौर पर उन्होंने सिंध को ज्वाइन किया है, जो बाएं हाथ तेज बॉलर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। उनको बुलाया गया है क्योंकि जीशान जमीर जो हैं पूरी तरह फिट नहीं थे, उस स्क्वाड से बाहर हो गए। नीचे बॉल। बगैर कोई मैच खेले ही जीशान जमीर आखिरी अच्छा गरबा शाबाश। ये टूर्नामेंट उनको छोड़ना पड़ा, आखिरी अच्छा बदकिस्मती है। हालांकि बड़े बासलाहियत बॉलर हैं। बिल्कुल, काफ़ी उनको देखा भी अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, और उम्मीद ये थी कि एक बार फिर एक्शन में देखेंगे। बड़ा प्लेटफॉर्म था उनके लिए, काफ़ी नज़रें उन पे थी, लेकिन वाकई अनलकी रहे कि बगैर खेले जो है उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। नॉर्दर्न 76 बगैर किसी नुकसान के। Have a look at that economy. 9, 8, 11, 15. Danish is probably the pick of the bowlers so far, 1 over for 4 runs. This is a fantastic partnership. 8 overs, 76 for 0 at the moment. Sindh definitely on the back foot, struggling after winning the toss and opting to ball first. You would hope and expect their bowlers to get early wickets. But how well that youngster Herrera has played. 52 of 27 deliveries. My friend on my left, Shah Faisal, he's a happy man because he really likes Herrera and he's delivering. Good morning, Ali, and good morning all. Yeah, excellent start for the youngster. We saw plenty of him last year in the 4-day game, and he always used to say that the transition from 4-day game to the shorter format is easier than the other way around, and he's absolutely proved that. A good range of strokes, especially that uppercut. Well ball. That really deflated the bowlers this morning, and his team is in a very good position. Yeah, lucky for him also that he's been given the opportunity on a very, very good pitch. The ball is coming nicely onto the bat. And he's been very brave. He's opted to play every shot that he has. He's shown the skill that he has. He's shown that he's got something in him. As they say, sometimes you create your own luck. He bided his time. He was carrying the drinks in the Rawalpindi leg. Kept working on his game. Oh, Zayed! Well done, Zayed. Very well done. Got one chance in that leg, but when he got an opportunity here, he made sure he made full use of it. Still in the middle. Zahid is trying to build some pressure back. Nasir Nawaz has played a few dots. This is danger zone for him because he doesn't like to be pinned down. What about the fielding? They've been disappointing since somebody like Anwar Ali. Ball going through his leg a couple of times. And when you're looking to ball first, you need early wickets. There was a catch gone down. It's not working for Sindh, although they won an excellent match the last time they played. Only one.
But here they're definitely struggling. We'll continue talking about that. 9 gone, 81 for none. Much happier, much comfortable group of people, young lads, very energetic boys. This northern side. Zishan Malik getting another opportunity. You were at the pitch, Faisal. You love doing pitch reports. What do you make? This is such an excellent pitch. What's the difference between this pitch and the pitches we saw earlier in Rawalpindi? There's definitely, because this pitch, the ball is coming nicely. Less bounce. I believe spin will have a lot of role to play. Oh, that was an expensive shot. Turn and bounce. He had a little stretch during the overs, Pereira. A little bit of cramp, I guess, but he went for that big shot. You make a good point about spin having an impact. This is quite a different pitch from Rawalpindi. Danish got the bounce, but Pacers didn't get as much bounce, so you can just put your foot down and hit through the line much more comfortably. Bowlers haven't been able to put you onto the back foot, especially the quicker men. Through the gap now. Didn't quite get the middle, but almost got the boundary. Umpire will have a look, I have a feeling. But that outfield is very, very quick. Off the thick outside half of the bat, it almost ran to the boundary. It's a good effort though. But then again, having two, I shouldn't be saying it, but weak fielders of the side. The same position at the point, which is a very important position, that point and third, especially when a left-arm spinner is bowling. Maybe a quicker man, a better fielder at point would help. I just love how Sarfaraz behind the stumps, he said, "Bagao inko." Probably realizes it's very hot out there. It's not easy. As we see this replay, I think he's made a clean save. Look at the two batters. They're sitting on their haunches. They're really tired. It's hot, you have to say that. Battle there for the players with their fitness and all. Nasir Nawaz, subdued knock from him. You're talking about the pitch, like I was saying, on this pitch, you can just put your foot down and hit even the faster man on the up, because they won't threaten you with the bounce. But when, at the end of last over, what you were talking about, that Sindh is really struggling and Northern are on top. I think this pitch is made for good scores, or big scores rather. Up and over. The sound of the bat was so sweet and it carried all the way. At the halfway stage, Northern 92 for none. Bit of breather for the batters. They've done a good job for Northern. They've run well. They've stroked well. They've given their team that start they've been looking for in this tournament. As we know that they've been struggling, those two top three batters. They've made a change, an excellent change. Brought in Herrera, gave a lot of stability up the order. It's a good start, no doubt. But Ali, like you were saying, I think on this pitch, 180, 190 is only par. Even as a bowling side, you can string a few good overs at any stage of the innings and restrict that scoring from under 200. I think you would have done a good job. Yeah, the average first innings score on day games is 189. That is... Oh, there's an appeal by Sarfaraz. No, says umpire. In fact, he says it's a void. By the appeal of Sarfaraz, it looks certain he is still talking. That's what he loves doing. Disappointment.
or frustration? Bit of both, I think. It did miss everything by quite a distance. Sarfraz appealing. It was away from the pads of the batter and the bat. Probably he heard something. Oh, that's lucky. Very lucky. Just love his aggression. His passion for the game. Sarfraz Ahmed is always involved. He's always talking, chirping in. This is the 6. Good use of the feet. And that power behind it, the force behind it. It's called for 2. It's called for 2. He's not getting it. No, Herrera is coming back. That is excellent. That is top class cricket. That is what you want to see from these young legs. Fantastic. Excellent cricket. Pitch the fielder hard. And this is a big outfield. And it's a big old circle. So in the mid wicket and extra cover, you got big pockets here. You can run 2 here every time you hit the gap. Again, they're pushing hard. This one is slightly straighted to the fielder. Content with a single. So yeah, running between the wicket is important here in this ground. But it's hot. It will test your fitness levels, that's for sure. It's very hot. I could tell when you were there at the pitch report, you were sweating, my friend. So yes, at that moment I thought it's going to be hard work for these cricketers. Down the track. Over the hat. That is excellent cricketing shot by young Herrera. He's making most use of this opportunity. He's not shying away from hitting big 6s now. He's showing his skills. He was nowhere near to the pitch of that ball. Zahid bowled it slower and just waited for it a little bit longer. Extend his arms. He's a tall boy. Good reach and made full use of that. Look at that. He was away from the ball. He went through with the shot. The connection was sweet. That's through again. Work to be done by the sweeper. Oh, that's touched it. That's touched it. The disappointment shows it. Fielder and the bowler also. That's Faraz playing his first game. Runs are flowing here for Northern. And Herrera, who's suffering from a bit of cramps, I think, he's decided to play a shorter ball. A 6 followed by a boundary. This is going at great guns. Just don't give it away. He's got this excellent start, Herrera. 69 at the moment. I would want him to get a big one, get 100. That's what the openers do usually when they get the start like this. Faraz was unlucky. He did all the effort, but the ricochet went back into the skirtings. Another little break in play. 11 gone, 108 for none. Even without Ali Imran, they've done a good job, Northern. He was such a key member before Umar Amin came back. And now it seems like they've settled in well, this young group of people. Mehran Mumtaz also their left arm spinner, very good one. Amir Jamal. As we see Saim Ayub for the first time today. Seems like it's going to be spin to win here in Multan. Like I said earlier, there's nothing in the fast bowlers in this pitch because batters can really enjoy the extra pace. Only one. Just the one, Sarfraz. And behind the stumps, keeping everybody on their toes like he normally does. Simon's an interesting prospect because
He bowls from the front of the arm, bowls the carom ball, the leg break and the off break. So a mixed bag of everything. He started to bowl more and more lately. Such an excellent talent. The way he's been batting in this tournament, it's just been tremendous. He's authoritative. He's looked to dominate every time he's in the middle. Just similar to what Herrera is doing today. Dominate. Up and over. That is inside out cricket. That is lovely cricket. This is a fantastic cricketing shot by Herrera. Absolutely effortless. Just puts his foot down, went through with the stalk. Once again, not a half volley, but that balance is immaculate. Look at that head position. It's one of the more pleasing strokes in cricket, the inside out drive, whether along the ground or in the air. Splendid cricket from Herrera. Down the track, straight, very straight. Excellent result again. He's not shying away. He's showing all the skill, all his shots that he has in his armory. Wonderful. It's raining boundaries here at the Multan Cricket Stadium, and most of them off the bat of Herrera. Once again, use of the feet. Prepared to go down the wicket. This time got closer to the ball. That's why he could hit it straighter. Good piece of timing. Off the back foot, there is a fielder. No, not quite carrying it to him. Herrera, stay there till the end. 12 overs gone, 119 without a loss. Yeah, talking about pleasing, this is something that really pleases me. This DICC Champions Trophy in UAE 2022, showcasing amongst the most talented deaf cricketers on the planet. That is an excellent initiative from 1st October to 9th October. Excellent. नए ओवर के आगाज पर वाइट बॉल. अब्रार ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए. काफी महंगे साबित हुए हैं सिंध के बॉलर्स. खासतौर पर हुरैरा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है और अटैक किया है शुरू से ही. ये विकेट ऐसी है जहां पर ज्यादा रन्स बनेंगे. ये एक अंदाजा हो रहा है पहले 12 ओवर्स के बाद कि इस विकेट पर 200 के ऊपर 200 भी बन सकते हैं. ये चीज सिंध को याद रखनी होगी. मिसफील्ड, यहां पे गलती कर गए. सिंध के फील्डर्स प्रेशर में जरूर हैं. इस प्रेशर में अपने नर्व्स को संभाल कर रखना होगा. 123, कोई खिलाड़ी आउट नहीं. गर्मी के बावजूद दोनों खिलाड़ी काफी तेज रनिंग कर रहे हैं और यहां मौका फील्डर की मिस्टेक की वजह से मिला उन्हें. या फिर हवा में खेला और फिर 4 रन के लिए खेल दिया. नासिर नवाज आज पावर प्ले में ज्यादा स्ट्राइक से हट कर रहे हैं, लेकिन अब वो हम कदम हो रहे हैं स्ट्राइक रेट के मामले में भी. हुरैरा से बड़ी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप टूर्नामेंट में, इससे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इससे पहले हमने नहीं देखी है. स्पिनर्स जो हैं बेबस नजर आते हैं इस पिच पर. बैट्समैन बड़ी आसानी के साथ उन्हें खेल रहे हैं बैकफुट से. हल्का फुल्का टर्न मिल रहा है लेकिन टाइम जो है बहुत मिल रहा है बैटर्स को. पिंडी की पिच की निस्बत इस पिच में उतनी पेस नहीं है स्पिनर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, और ना ही उतना बाउंस है. इसलिए बैट्समैन बिला खौफ व खतर बॉल से दूर रह के भी स्ट्रोक्स खेलने में कामयाब हुए हैं और ज्यादा रन्स बनेंगे इस पिच पर. देखिए एक मरतबा फिर बैकफुट से
खेल दिया किसी मुश्किल के बगैर नासिर नवाज ने। और ये नॉर्दर्न की ही नहीं और ओपनिंग की ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है जो हुरैरा और नासिर ने अब तक की है। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि मुल्तान में जब कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है तो इब्तिदा में पिच जो है ये बैटिंग के लिए साजगार ही रहती है। यहाँ पर कलाबाजी लेकर गेंद को रोका गया और 2 रन का और इजाफा। बड़ा सुनहरी मौका है हुरैरा के पास को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। पिछले सीजन में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तेरह के बाद 130 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। ओवर करने जल्दी से जाओ, इसी ओवर में आना। हेलमेट हेलमेट हेलमेट। इम्कान यही है कि उमर अमीन जो हैं वो जल्दी खेलने के लिए आएंगे। यहाँ पर विकेट गिरती है तो उसके बाद ताकि एक लेफ्ट हैंडर आ सकें। रोहिल नज़ीर, जीशान मलिक, मुबस्सिर ये दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। ये मुल्तान का कदीम शहर है, ये पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर है और ये घंटा घर है। मुल्तान की बड़ी पहचान है, बिल्कुल शहर के वस्त में वाक़ है। 1884 में इसकी तामीर हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में और यहीं पर म्यूज़ियम भी है। बहुत कुछ देखने को है। जब आप पहुंचते हैं मुल्तान और आप इस शहर में चलते हैं तो एक तारीख भी आपके साथ साथ चलती है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के तमाम ही शहरों का के अपने रंग हैं। मुल्तान जब आप आएँ तो एक डिफरेंट फील आती है। इसकी मिट्टी की जो खुशबू है वो बाकी शहरों से कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन तारीख और उसका एहसास बॉलर्स को भी हो रहा है मुल्तान पहुंचकर पिंडी से। नॉर्दर्न को खासी मायूसी होगी अगर उनने 200 रन आज नहीं बनाए। अभी तक किसी भी टीम ने 190 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं इस चैंपियनशिप में। लेकिन इस बात की ज़मानत नहीं है तारिक के यहाँ 200 रन भी जो है वो महफूज होंगे जिस तरह की ये पिच है। दो रन का बुलावा दिया था लेकिन इसका मौका मिलेगा नहीं। साइम अयूब थे बाउंड्री लाइन पर, दरअसल उमर बिन यूसुफ थे। इस साल जब पाकिस्तान के मैचेस खेले गए थे तो जो पहले बॉलिंग करने की एक रीत थी, जिस तरह सऊद शकील ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी, पाकिस्तान कप में सुबह के वक्त बैट्समैनों को खासी मुश्किल पेश आई थी सीम और स्विंग के सामने, लेकिन आज ऐसा कतई नहीं है। रावलपिंडी लेग में अगर हमें सिर्फ एक ही मरतबा 200 देखने को मिला, लेकिन लग ये रहा है जो कराइन यही बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी दफ़ा ये देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि शायद 200 पर 200 भी यहाँ जो है वो गैर मामूली नहीं होगा। अच्छी एफर्ट थी अनवर अली को, बॉल को इतना ऊपर तक लेकर आए, हुरैरा को बैक फुट पर धकेला। रैंप अच्छा खेलते हैं हुरैरा फास्ट बॉलर्स पर, अपर कट। इस मरतबा अलबत्ता लाइन ऐसी थी कि वो खेल ना सके। फुल टॉस, लेकिन खासा खुला मैदान है लेग साइड में। इधर कहाँ जा रहा है, इधर थोड़ा
आउटफील्ड हरी भरी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की। पहले दिन से ही 2001 में यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई थी, जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई एशियन टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। वसीम अकरम का वो पाकिस्तानी सरजमीन पर आखिरी टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान ने एक इनिंग्स से जीता था। और इसे उठाकर खेल दिया, यहाँ कैच आउट हो जाएंगे। फील्डर तैयार हुए गेंद के नीचे और सऊद शकील ने इस मौके को नहीं जाने दिया। बाउंड्री लगाकर अपनी निस्फ सेंचुरी तक पहुंचना चाहते थे नासिर नवाज, लेकिन गेंद उनकी तवक्को से ज्यादा बाउंस हो गई। अच्छा बैक ऑफ द लेंथ बॉल था अनवर अली का। उन्हें ये एहसास हुआ कि ज़्यादा आगे बॉल करेंगे तो थ्रू द लाइन भी हिट लग सकती है। नासिर नवाज के हाथ में बल्ला फिर गया जब बॉल लगा, ज़्यादा सॉलिड कांटेक्ट नहीं था और आसान कैच सऊद शकील के लिए। नवाज ने इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा अच्छी इनिंग्स खेली, 47 रन बनाकर आउट हुए 132 पर 1। ये अच्छा फैसला है, बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया गया है। आमिर जमाल जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और इस टूर्नामेंट से उनको खासी शोहरत मिली है, उनके छक्कों की वजह से आज उनको जल्दी भेजा गया। ये बिल्कुल वैसी सोच है जैसे पाकिस्तान ने इस एशिया कप में मोहम्मद नवाज को भारत के खिलाफ और शादाब को अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग करने के लिए जल्दी भेजा था। 183 का स्ट्राइक रेट है इनका आमिर जमाल का, और औसत भी अच्छी है। अभी सिर्फ 10 ही मैच खेले हैं। अच्छा आगाज किया अपने कैरियर का और जैसा आपने कहा उन पे अब नजरें होंगी। इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी पिंडी लेग में, यकीनन हर आने वाली जो उनकी इनिंग्स है या बॉलिंग परफॉर्मेंस उस पर ज़रूर नज़र रखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर। पीछे फेंका कर यार, इधर आओ, 1 बाउंस फेंकना। मोहम्मद हुरैरा जो हैं उससे पहले निस्फ सेंचुरी बना चुके थे, यही करने की कोशिश की यहाँ नासिर नवाज ने, लेकिन वो कैच आउट हो गए और बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा पहली विकेट के लिए सऊद को, तकरीबन 14 ओवर्स का। अब आप टॉस जीत जाते हैं तो तवक्को करते हैं कि फास्ट बॉलर जल्दी आपको विकेटें दिलाएंगे, लेकिन आज अपने जो 2 सरकर्दा फास्ट बॉलर्स हैं उनके बगैर सिंध ने ये मैच खेला है। एनएसआर जो है वो मीडियम पेसर्स पर ज़्यादा था, अनवर अली को जल्दी बॉलिंग के लिए लाना पड़ा और स्पिनर्स पर ज़्यादा एनएसआर था। 133 पर 1। सादा पानी ठंडा भिजवा दें प्लीज। ठंडा है। सिर्फ 3 ही रन आए अनवर अली के पिछले ओवर में। यहाँ पे स्कोर्स तो ज़्यादा बड़े होंगे ही, लेकिन बॉलर्स की जो डिफेंसिव स्किल्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी आजमाइश होगी, क्योंकि चंद अच्छे ओवर जो है जो मजमुआ 200-220 की तरफ जा रहा हो, अगर उसको वो पीछे 190-200 तक धकेलने में कामयाब हुए तो वो काफ़ी बड़ी कामयाबी कहलाएगी। बैटिंग टीम डोमिनेट ज़रूर करेगी, लेकिन जो आखिर के ओवर्स में या किसी भी स्टेज पर आपके 3-4 ओवर्स अच्छे हो गए तो वो आपका मजमुआ जो है वो इस काबिल होगा कि जब आप चेस पर जाएं तो वो नफसियाती
हद के नीचे रहें जिसको आप कंफर्टेबल फील करते हैं चेस करने के लिए। यहाँ पर हुरैरा देखते हैं कि सेंचुरी के लिए अपना टाइम लेंगे या नहीं, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न अपना पेस यहाँ से ड्रॉप कर नहीं सकती। जोरदार हिट लगाई सर और बार वक्त पहुंच गए साद खान। जरा देख लें भाई। बाउंड्री फील्डर्स जो हैं खासे चौकस रहेंगे क्योंकि पहुंच गए हैं पिच पर। आमिर जमाल और किंगडम वैली के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, आपको इनामात जीतने का मौका है। अगले विनर आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 बरस पहले जब नेशनल T20 कप का पहला ही दिन था तो अब्दुल्ला शफीक ने सेंट्रल पंजाब के लिए सेंचुरी बनाई थी अपने डेब्यू पर। हुरैरा जो उनके क्लब में ओपनिंग पार्टनर हैं, आज उनके पास मौका है। क्लब क्रिकेट सियालकोट में एक ही साथ खेली है हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक ने। सिर्फ 14 रन दूर हैं, अभी बहुत ओवर्स बचे हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि थकेंगे नहीं। कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल बैटल कर रहे हैं। लगता है ये कि कुछ क्रैम्प्स का उन्हें है मसला, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जो अच्छे आगाज को या अपनी विकेट को थ्रो करने के मूड में नहीं है। काफी डिटरमिन्ड क्रिकेटर हैं, ये हमने देखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। और जब आप 300 कर सकते हैं इसका मतलब है कि आपको बैटिंग करने से बहुत ही प्यार है और आप अपनी विकेट देना नहीं चाहते। इस फॉर्मेट में भी यही दिखा रहे हैं हुरैरा। अंदर ही है। इस बार उठाकर खेला और फील्डर गेंद के नीचे आ गए और ले चले कैच। हुरैरा जो थके थके लग रहे थे, रनिंग में उनको मुश्किल पेश आ रही थी। इस बार छक्का लगाने की कोशिश में गाइड दे बैठे बाउंड्री पर और यूं इसका उनको मलाल रहेगा। बॉल से दूर रह गए, टाइम नहीं कर सके, वो आवाज नहीं आई जो हुरैरा सुनना चाहते होंगे जब गेंद बल्ले से टकराई। बिल्कुल उन्हें एहसास हो गया था, लेकिन आप को दाद देनी होगी क्योंकि बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है मोहम्मद हुरैरा ने। सिर्फ 52 गेंदों पर 86 रन। नॉर्दर्न की टीम 137 पर 2। नहीं स्कीपर ढीला नहीं करना। अच्छा पहली 2-3 बॉलें नया बैट्समैन खेल लिया, ज्यादा अच्छा है। पिछली 12 गेंदों में सिर्फ 7 ही रन आए हैं और 2 विकेटें भी गिरी हैं। अच्छा कमबैक किया है सिंध की टीम ने। और जो रन रेट 10वें ओवर के बाद मुसलसल 10 रन से ज्यादा का था नॉर्दर्न का, 15 के बाद कम होकर तकरीबन 9 रन का रह गया। यहाँ हुरैरा चूक गए, थका थका शॉट था और बाउंड्री क्लियर नहीं कर सके। टाइट बेटा टाइट जरा, शाबाश। आजकल अक्सर हम देख रहे हैं कि जो पहले 10 ओवर्स होते हैं बैटिंग इनिंग्स से, उनमें रन्स बनाना ज़्यादा आसान होता है आखिरी 10 ओवर्स की निस्बत। नॉर्दर्न को इससे अच्छा आगाज मिल नहीं सकता था। उन्होंने इस रन रेट को बरकरार रखने के लिए बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया है। 2 तब्दीलियां की हैं बैटिंग ऑर्डर में। पहले आमिर जमाल को भेजा गया, सुहेल तनवीर को। सुहेल तनवीर अब तक टॉप स्कोरर हैं नॉर्दर्न की टीम के। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं नॉर्दर्न की बैटिंग की तंगदस्ती की। ये दोनों टॉप 2 बैटर्स हैं। आमिर जमाल दूसरे नंबर पर हैं। उमर अमीन ने शुरू के कुछ मैचेस मिस किए। यहाँ आमिर जमाल की हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ नॉर्दर्न की हिकमत अमली से,
लेकिन सुहेल तनवीर मुझे लगता है कुछ जल्दी आ गए। यहाँ 4 रन्स का इजाफा हो गया और गेंद बल्ले से टकरा गई थी, गेंद को रीड नहीं कर सके क्योंकि कभी कभार फिंगर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेग साइड में खेलने के लिए चले गए थे। लगता ही है कि ये कैरम बॉल था क्योंकि साइम करते हैं ये बॉल और अगेंस्ट द टर्न खेलने चले गए थे आमिर जमाल, काफी सरप्राइज हुए। ये अच्छा स्पेल चल रहा है सिंध के लिए गुज़श्ता 2.5 ओवर से। इस बार ये कैच क्लेम किया और ये आउट करार दिया गया आमिर जमाल को। या टीवी अंपायर से इस्तिफसार किया जाएगा क्योंकि अंपायर साकिब खान ये समझ रहे थे कि खुद ही चलना शुरू कर देंगे आमिर जमाल और अब उन्होंने मुत्तला कर दिया है कि आप आउट हैं। दरअसल आमिर जमाल ने खुद चलना शुरू कर दिया था लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें चांस लेना चाहिए, लेकिन फिर अंपायर से बातचीत के बाद वो वापस चल दिए। तो नॉर्दर्न को एक और नुकसान और सिंध की कमबैक का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 ओवर्स में ये तीसरी विकेट हाथ आई। आमिर जमाल से तवक्को थी कि वो बड़ी हिट्स लगाएंगे लेकिन आज वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ऐसा लगा एक मौके पर कि बल्ला और गेंद जो है वो जैम हो गए और बम बॉल हुआ होगा, लेकिन हम बिल्कुल हाफ वॉली पे था। तो आमिर जमाल को बैटिंग में प्रमोशन आज रास आई नहीं, 6 रन्स उन्होंने स्कोर किए। सिंध ने बिल्कुल उनको पेस ऑफर नहीं की, 142 पर 3। जीशान मलिक टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। खेलने के लिए आए हैं, देखना ये है कि इनका रद्द-ए-अमल होता क्या है क्योंकि डेथ ओवर्स में ये बैटिंग करना आसान काम इतना है नहीं। अब टाइम टाइट रखना बेटा। लेकिन सिंध की टीम फाइट बैक कर रही है। 132 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 10 रन्स के एवज उनने 3 विकेटें गिरा दी हैं और अपने कदम जमा लिए हैं इस मुकाबले में। गुज़िश्ता 3 ओवर्स में 3 विकेटें भी आई और रन्स भी ज़्यादा नहीं बने और वो जो मजमुआ एक वक्त पर 200 से ऊपर का लग रहा था, टाइट रखना, टाइट रखना। लगता है कि शायद 200 तक पहुंचना भी मुश्किल हो। यही वो फ़र्क है जो शायद आखिर में फैसला कुन भी साबित हो इन मैचेस में यहाँ मुल्तान पे। यहाँ ज़ीशान और सुहेल तनवीर से एक कैमियो दरकार होगी, खासतौर पर ज़ीशान से। बाकी मतलब 4 ओवर्स में 144 पर 3। $144 for 3. 4 overs to go from here, and this is a brilliant platform set up by the northern openers, Barrera and Nasir Nawaz, for a 100 partnership, and is now 9 runs and over.
This is a very good batting pitch for sure. You apply yourselves, you surely got runs around here, and that's what I think Sindh has already realized when they won the toss and chose to bowl. They're also missing some firepower in the bowling. Yeah, Suhail and Mir Hamza has been rested. That did affect the two ace bowlers for Sindh. Northern has really capitalized on this opportunity. It's not a formidable bowling lineup today for Sindh. And it was a great batting display from Horera and Nasir Nawaz. Delight to watch them. Another boundary there. Boundaries have been coming in thick and fast. 17 in this innings. It's really hard to contain runs here. Such a decent surface. Anything loose, they'll always go for boundaries, and you can just cultivate shots out from the surface. Bowlers have really struggled to hit the right areas to keep batters under check. It was a brilliant start from the openers. Could capitalize on it. At some time it looked like they might be clicking that 200. Good comeback from Sindh though. One short over 150 mark, Northern. And the loss of wicket has surely put breaks on certain level. They were going at almost 10 and over. But now bringing it down to 9, we're in the 17th over, they are 149. I was thinking they might get to 200. But still, Sohail Tanveer is out there. Ahmed Jamal could have hit a few, but he's not there anymore. They'll have to really pick the bowlers from here. They can actually express themselves. They've got good runs on the board. They don't want to spoil this start and finish off as somewhere around 165. That would be a shame. Yeah, plenty of batting to come. Shouldn't be really cautious about it. 150 up for Northern in 16.4 overs, just 3 down. The platform was set for them. They did try to continue that. Sending Ahmed Jamal in there. Sohail is out in the middle. He can hit big. He scored 70 odd runs. Nicely picked up. He will go to the boundary. Yes, he tried to slap it back in to play, but the ball was travelling. I'll tell you what, this ground has seen some big scores, Marina. 242 is the highest on this ground in a T20 game, and that is by Northern. Scored it against KP. Yeah, picked up nicely. And this is just a warm-up. I'm sure we're going to see a lot of runs, totals going across 200. Such a decent surface, and it's not going to be easy. It's hot out here for bowlers. Surface like these, you have to have a certain defensive skill. No swing, no support whatsoever for bowlers. It's high in the air. This should be out. The bowler going himself should take it. Oh, it's gone right through. Reverse cupping. It probably just brushed his fingers. And it's the end of the over. Sindh all over the place. 17 gone, 155 for 3. Yeah, he overran it. Was almost there. Did judge it well, but again, I don't think reverse cupping was a good technique to go. How costly that will. Sohail Tanveer, Zishan, they're starting to gain momentum now. Ibrar back in the attack. He's given 28 in his 3 overs.
ये शाबाश बस जिला शाबाश यही टाइट टाइट जरा इधर ही जाना है. Abra's first over was expensive. He's pulled things back nicely. That's the drop catch in the last over of the previous over. I'm not really sure, Marina, that if you're running backwards and your ball is right on top of you, in that manner, reverse cupping is a good idea. Rather let the ball fall in your lap. Again an opportunity. This time the keeper says it's mine, and that's the way to do it. Sohail Tanveer twice trying to work it on the onside, getting a top edge, and this time the safer man is the man with the gloves. He's trying to go big. Never really got to the pitch of the delivery. Just wanted to slog it, and this time no problems there. Sarfaraz, he called him loud and clear, and Abrar has got his man. First wicket for him. Sohail has to go back, scoring 8, Northern 155, 4 down. Umar Amin, the captain of Northern, coming out at number 6. You just get a feeling that somewhere Northern is running out of fuel here. 155 for 4. And the 18th over, they'll probably be targeting something around 180. They've got to do that because they've had such a great start. They were 92 for no loss at the end of the 10th. Just been able to add 60 odd in the next 7.5 overs. So they have considerably slowed down. Good comeback from Abrar Ahmed for sure. Was there an edge on that? The ball spinning away. He turns it both ways. It's going to go for 4. Lucky boundary to get off the mark for Umar Amin. It was a hard slash outside off stump. Always going to go away from him. There was a certain edge, yes. Faraz was beaten this time. I think the idea was right. They wanted to capitalize the foundation set by sending Amar Jamal. He couldn't work out. Big shot, straight one, and one bounce, 4. Well, he's going to target. There's no time to spare. Umar Amin realized it very quickly the moment he walked in. He had to go hard. Back-to-back boundaries. It wasn't a bad ball, just the room outside off stump. $18 gone, 164 for 4. सर 2 लेग देख लें प्लीज ठीक है 2 लेग And Murali will bowl his last 1 for 21, his figures. 20 boundaries in this, 3 sixes also for the Northern innings. The first game of the second leg of the Kingdom Valley National T20 starting off in Multan. Tomorrow another set of day games, and then we go on into the floodlights starting Monday. Round the wicket to Umar Amin, and Murali bowled the new one today. That should be out. He doesn't have control over it, but no, Sharjeel can't reach it. Coming back for the second.
direct hit would have been यार फरहाद curtains बॉल for पे आओ Umar ना, Amin. क्या हुआ नहीं यार, 2 रन थोड़ी है। Should have been caught in the deep. Just bouncing it into the wicket. Taking pace off, that's one way to go about it. Has been very ordinary in the field Sindh today. A lot of misfields, drop chances, half attempts. Don't want to give that cushion to the opposition while they're batting superbly in the middle. Oh, good stop there. Was hit hard. Anwar Ali is one athletic bowler. He just had enough on it to keep it travelling down the ground. Seems like they're struggling Northern right now. Just lost their track somewhere in the middle. Sindh has done well to keep things back in their corner. Mid-on walks inside the circle. Got long on. The fine leg is being sent back. Deep square leg, deep mid-wicket. Third man coming in. Got deep square and deep cover. It's going to be pretty straightforward delivery within the stumps. Flat 6. I mean, really, this ball, you can hear Sarfaraz. You don't need to bowl this line or length. Short ball, and he's going to just smash it away. Got nothing to lose. You're in the 19th over. You need to understand what sort of a surface you're bowling on. It's not that windy surface where it was gripping a little bit. It's coming onto the bat really nicely. Had all the field set for a Yorker, and then he came up with this kind of a delivery, asking to be punished. And that's exactly what Zishan has done. That's a good follow-up delivery. Pitching it up, taking the pace off. Probably again would like to come within the stumps a little bit. Anything slightly outside off stump, you put a wood on it and it might travel. It was a risky delivery though. Nine of the over. There's still 2 balls to go. That's a good ball. Full and wide outside. Trying to make it tough for the batter to hit it big. And the reach gets tough. You end up getting the toe end of the bat and you don't get that force that you need in the shot. It's just that had he played it towards the third man, could have run away for the boundary. Within the stumps, that's the ideal way to go about. Sindh will be pretty happy. They managed to pull things back. Got a healthy batting lineup. Hit straight, hit hard. End of the over. 11 of it. 175 for 4.
Asif been given the responsibility for the last over. 33 from his 3. No success as yet. .38 scored in the last 4, so they have slowed down considerably. What can they get in the last 6 balls? Catch it is a call. Anwar Ali coming under it, and just drops short. They come back for 2, and they complete it as well. They're taking their chances. It's trying to go straight over the head. The length wasn't there to get underneath it. Somewhat, I don't think pace was offered. That's why it didn't travel. Again, straight to the fielder. 3 of the first 2. They'll target something 190. Can they get that? They are 12 away from it. Surely this is a very good pitch to bat on. Mubassir. Rohail has been shuffling up and down in the batting order. The requirement was such that when they got a more than 100-run partnership with the opening pair, the captain sent in Ahmed Jamal to get some big hits going. Just a single leg by. Good over up till now. He's managed to hit the right areas, the right length. That's more important on the surface. Just rolling his fingers. Ambitious appeal though. Northern, yeah, they did had some concerns carrying on that momentum the openers did set for them. Need to finish big. Nice shot. Very nice shot. Angling, opening the face, just playing over cover. It just helps adding 4 more runs. A valuable total. 183 at this stage, 21 boundaries. It's been hard work for the bowlers today. It's a good boundary from Umar Amin. Just the angle helping it. 2 more deliveries. What can they extract from it? We've got to look at getting at least 1 boundary out of these 2. That's a very good ball. Excellent delivery. Not much you can do about it as a batter. Just dig it out and go for a single. 1 ball to go in the innings. Really a good comeback from Asif. It's never easy in this heat. Coming and bowling the last over when Northern is firing away. Apart from that boundary, he did really well, and it was credited to Umar Amin. He crafted that. Just 1 more to go. Last ball. And that's very well done. Something that Sindh wouldn't want. A good over ends up with a 6. So it brings in 15 of the last over. 190 has been touched by Northern when they were asked to bat first in their 20 overs. That is a good score to start off the National T20 here in Multan. The maximum to end the over, which otherwise looked like a good one. Right in the slot, and he helped it on its way. It was a free hit of a sort, and Northern will be pretty happy. They managed to click that 190 mark. And that's probably the average score around here on this ground in day matches. Sindh, on the other hand, they know it's a good surface, but they have to work hard. They've got all the resources in their batting lineup to chase it down. Here's that opening partnership.
brilliant from Herrera and Nasir, got them more than 100 runs. Then the gamble of Amir Jamal didn't really work out, so Tanveer also couldn't get it going. That's where their run rate went down slightly. Then Zishan and Omar Amin smashed a few, getting 53 of the last 5 overs, 190 for 4. Sindh winning the toss, decided to bowl first. Not much to talk about in terms of economy. Anwar Ali, Ibrar, Zayed and Saim Ayub with each 1 wicket. Herrera is down there waiting for us. We'll have a quick word with him. Had a good, great knock today of 86. We're just waiting for Herrera to join us. Herrera, that is a brilliant start to the tournament, and we've seen that this pitch is like a good track to bat on. I guess you guys got it right even after losing the toss. Yeah, it's a very good pitch to bat on, and I think we're 10 to 15 runs short according to the pitch, और वो भी मैं अपने ऊपर हूँ. ये बात आपकी सही है. लग रहा था कि आप लोग तकरीबन 100 पे पहुंच गए थे halfway through in the innings, and somewhere थोड़ा सा dip हुआ run rate, और we were expecting कि 200 हो सकते हैं यहाँ पे. Chaseable भी होगा तो जरा bowling का बड़ी सख्त करनी होगी. Exactly, बिल्कुल. जब हाफ वे के बाद सिंध ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया, अच्छी बॉलिंग, अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे. इट वाज डिफिकल्ट टू हिट फ्रॉम दैट लाइन, और बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ हमें फील्डर्स को भी उनका बॉलर्स का पूरा साथ देना होगा. हुरैरा, लॉन्गर फॉर्मेट में आपको बड़े स्कोर करते देखा है. T20 में किन मेन चीजों पे आप फोकस करते हैं? सॉरी, बड़े फॉर्मेट्स में आपको लंबा स्कोर करते देखा है, लेकिन T20 में क्या मेन एरियाज हैं जिनको आप फोकस में रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यही फोकस होता है कि जिधर भी, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, अगर कोई बैट बॉल मिले तो मैं उसको बाउंड्री की तरफ जो है बाउंड्रीज पे लगाऊं, और उसके अलावा जो अच्छे बॉल होते हैं उनके ऊपर जो टैप करके सिंगल, स्पेशली T20 के अंदर बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक 20 ओवर्स आर ऑल्सो इनफ इफ़ अ बैट्समैन बैट्स थ्रू आउट द इनिंग्स, एंड अगर आप अच्छी बॉल्स पे सिंगल लेते हैं, यू जस्ट गेट 19-20 बॉल मिलता है आपको, और आप उसके लिए रेडी हो तो आप उसको उससे बाउंड्री ले सकते हैं. बिल्कुल. एज अ टीम प्लेयर आपसे बात करूं, बॉलर्स के लिए क्या एक एरिया आप कहेंगे कि यहाँ पे डिफेंड करने के लिए बेहतर होगा जहाँ बॉल करें? एक तरफ से बाउंड्री भी थोड़ी सी बड़ी है. आई थिंक अगर विकेट टू विकेट अच्छी लेंथ हिट करेंगे, हार्ड लेंथ हिट करेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हिट शॉट्स ऑन दिस पिच. थोड़ा सा पिच सपोर्टिव है, थोड़ा सा स्पिन भी आपने देखा, बीच में कुछ बॉल्स हुए हैं, तो होप्स हो गए इंशाल्लाह विल डिफेंड इट. थैंक यू हुरैरा, वेरी वेल प्लेड. थैंक यू. Let's have a second look at the northern innings. 190 for 4 with Herrera and Nasir Nawaz opening, and straight away off the mark attacking Anwar Ali, getting like 2 or 3 boundaries in the first over. Started off with 13 runs and over. They were going great guns, using the power play to the best in their knowledge, and opportunities, half opportunities. Sindh was a bit sloppy in the field today, and they were struggling. Drop catch over there would have been a good one had he taken it, but then the length also. If you see, don't have the wagon wheel here, but most of the runs have been scored square of the wicket. They've been too short. Spinners who are attacked, because this is the true bounce on this pitch. You can trust everything as a batter, and you don't have to worry about exposing your stumps and cutting something square. Some very classy shots, and I think they did very well to take them to the cleaners. Sindh did well to put things little back in their perspective, having back-to-back wickets. The runs kept on flowing. This was Amir Jamal promoted up the order to continue the fireworks, but it really couldn't work out for them. This was just lucky runs coming in. That was a good catch. Saim Ayub grabbing 1 wicket for himself. All over Northern, they managed to get the momentum back in the corner, and the boundaries went flowing. There was no problem whatsoever. This was another wicket down. It was a drop chance rather. Would have been an easy catch. So Tanveer wanted to express himself, but Sarfaraz with a good catch ended that. Omar Amin came in hard, went after the bowlers. Couple of boundaries back to back for him. He gained the momentum back to Northern. And this was the last one, the maximum to end the innings, and they reached 190.
Sindh, it's a good surface to bat, but they will have to bat deeper and with a resolute plan. How they go about the run chase, we'll see after a break.
Northern versus Sindh, and this is game 1. A big number, 190 for 4 is what Northern have put up. Northern 190 for 4, great start in the opener partnership, and then down the order. Zishan Malik and Umar Amin having a partnership. Still you feel they're probably 15 short from what they could have got, but 190 you'll take it if you can bowl well in the right areas and try to get early wickets if possible in the power play. That has been struggle for Sindh bowlers, especially those new ball bowlers, Anwar Ali and Abrar. They were expensive early on, but they put back things nicely. 1 wicket for Anwar Ali, 1 for Abrar, 1 for Zaid Mahmood, and 1 for Saim Ayub. But that economy is on the higher side almost of every bowler. Shajil Khan and Saim Ayub, the boy in form. But the good part for Sindh is that Shajil did get some runs in the last game, showed that he's still got it in him. Played some nice stroke, and he would like batting on this pitch because the ball is coming nicely onto the bat, and we know what he is capable of, Shajil Khan. Look at that, those numbers. The strike rate 130, the best of 117. This one, ये लग स्क्रीन मूव होंगी, स्क्रीन बीच में करा दें. Yeah, you just said that probably Northern are 15 to 20 runs short. Well, they cannot blame anyone but themselves. They shuffled the batting order. That number 3, when you lose first wicket in 13th over, probably that was not the right time for somebody like Amir Jamal or Sohail Tanveer. They could have gone with the normal batting they have, Umar Amin, Zishan Malik, but they preferred sending Amir Jamal and Sohail Tanveer up the order. I think that's where those 2 overs that they took probably went in the favour of Sindh, and in the end they were short of 15 to 20 runs. They should have easily got to that 200 mark easily, but at the moment Sindh required 191 runs to win. I think the idea wasn't that bad, sending Amir Jamal. He's got some talent, he's got form going with the bat. But you also give credit to the Sindh bowlers in the middle overs. They tried their level best to pull that fast going run rate back a notch. But at any stage they never got below 8.5, and that's because of the start the openers gave. But then yeah, you still feel 15 short. As a bowling unit, you'd still say 190 is not an easy total to chase down, no matter how good a pitch is. Mistakes can happen. You bowl and keep challenging them. Start would be important. What can these two do? Sohail Tanveer. Yeah, the movement will test Shajil. It will test him because he doesn't really enjoy the ball coming into him, especially with the new ball. So you get him early and you are in business. But otherwise, if he is allowed to get settled, even for a couple of overs, then he'll hurt you. Saim on the other end is class. He's more textbook. He'll play to the merit. He will no brute force in his shot play. One slip and Sohail Tanveer will put his talent and of course his experience into play here. Yeah, the thing that goes in the favour of Shajil Khan is that we haven't seen much swing with the new ball. That is what Shajil Khan would be hoping. He got going, he got some runs in the last game. And this pitch, if you don't get swing, it's hard work for the fast bowlers. If you don't have express pace, if you're not 140 plus, you will struggle. In the first inning we saw Anwar Ali starting off things, no swing. And Herrera was really brutal to him. Same would be expected of Shajil Khan. A slip is there, but for how long, we'll have to see. That's Shajil Khan for you. Just by the end of that Rawalpindi leg, he scored 49 runs. First runs for Sindh. He might come back for 2 now. They'll decide against it. Good ground covered there by mid-on. Yeah, those last innings that Shajil played, scored 49 runs against Southern Punjab. I think that would give a lot of confidence to Shajil and Sindh side.
And this boy, Saim Ayub, he's been the pick of the batters in this tournament. He's been wonderful. 92 is best. That strike rate is the best part of his batting. 138. He'll get better and better as he plays cricket at this level. He's shown that he's got the skill and potential. No, that's not really Saim Ayub like. But the ball is talking at the moment. Good start from Sohail Tanveer. Just a floater. That's what you expect from a seasoned campaigner like Sohail Tanveer. He's been around for a long time, played on different pitches, different conditions. He would know how to bowl on every pitch. As we've talked about it, it's so important to have that early start. Saim Ayub will have to do a similar sort of role that what Herrera did for Northern. Unlucky that he didn't get to that three-figure mark. Consistent. Very good. Good shot. That's a good shot. It's a good pitch. You've got to be very careful with your lengths here. First boundary for Sindh. And that has been his favourite shot. We've seen that he gets so many runs playing in that area, mid-wicket area. That is what he's learning. I've seen him practice these shots a lot of time. And it is paying off. He's not just consistent, but the strike rate he plays at, that is amazing. Scoring runs in every game with a good strike rate is definitely skill. Good shot off the back foot. That's another part of him that you'd love to watch. Good way to end the over, 9 of it. If you can play shots like this on back foot, that shows that it is an excellent pitch. The ball is coming nicely onto the bat. After 1, it's 9 for none. Look at that. You can watch this all day long. Picture perfect. Playing against a seasoned campaigner like Sohail Tanveer, you can just eased it. Nice one. Mubassir has been given the ball. It's got to be Mubassir's off spin. You'll always see that in operation when Sharjeel is on strike, and they will surely test him out there. But how good are you? That's important. You cannot just be an off spinner and get Sharjeel out. You've got to be very immaculate with your lengths. Yeah, 2 left-handers, Saim and Sharjeel. It's a good idea. Mubassir Khan will take the ball away from them. But we haven't seen much spin. And certainly with the new ball, it's going to be a tough job for Mubassir. And we know that if this man on your screen, if he gets going, this score will be chased down quite easily. 191, excellent pitch. Just wait on. You've got to stay. The way Herrera played, I think that is where you learn from, even from the youngster. How can you build an inning? He played all around the ground. Every stroke he showed that what he's made of. And similar is expected of these two. Leg stumpish. He just works it around. This time around, Sindh's opening pair has been relying on Saim Ayub's start, so it's a bit funny and role reversals here where Sharjeel actually sits and waits and watches Saim get those boundaries. He hasn't really had that blistering knocks in this tournament as yet, but this pitch is good. Maybe it's Sharjeel's time soon. Down the wicket and will go over mid-off. Will it go to the boundary? Yes, it does. So that's the difference here, role reversal that I was talking about. The attacking cricket option has been taken up by Saim. He's trusting it.
Excellent use of the feet. Just gave him a little room. Played it over that mid-off fielder. Placement was the key here. That is excellent. Top stuff by Saim. That's the difference in the style of batting. You see Saim Ayub coming down the wicket, getting to the pitch of the ball, covering the line of the ball. Whereas Sharjeel is more in one place. And he totally relies on force. Again, you see, just one foot forward to the pitch of the ball and just opening the face of the bat. It is such an excellent pitch to bat on. You can just tell by this shot through the line. Just have a look at that. The slot it was, and how beautifully he placed it. This boy has got lots of talent, lots of skill. The point you were making of that, he's kept Sharjeel Khan quiet on the other hand. Even in the last game when Sharjeel was going well, he scored 49 runs. He didn't stop himself. That is the quality. Oh, given. Saim Ayub has been given out, and that's a big one. That will send some jitters down the Sindh camp. Trying to play across, that's what it seemed like from up here. We'll have to wait and watch, but that is huge. Yeah, when you can play nicely through the line, why would you attempt this shot? That is where you need to learn. New ball, you can see the leg stump, probably hitting the leg stump. That's what Mubassir Khan was brought on for, to get that one left-hander out, and he's got that. Saim Ayub should be disappointed because this pitch is full of runs, and if you don't score runs, that's not good cricket. He scored only 16 runs. It's 19 for 1 now. Yeah, but then if somebody's going to say... In the context of the game and the form that Saim Ayub is in, this is a huge wicket. It's like you're going fishing and you're looking for a nice, easy meal, but you end up with a shark. That's a big fish that you catch. That's gone for 4. You got to be very careful about what you do in the field. The pitch is good. There'll be opportunity. You've got to stop the balls. You can't be replicating what Sindh did in the field. And now this should have been stopped by Zaman, right under his body. Well, it's a good start on the other hand for Saud Shakil. He's looking for some form, and this is a good opportunity. Runs will keep on coming, that is for sure on a pitch like this. You can't probably stop those early boundaries with the new ball, with field restrictions. You've got to be very lucky. 4 more. Yeah, that's a gamble Umar Amin has taken because he's not that difficult an off-spinner, Mubassir. He'll go for runs, so he's done his job. I don't see him bowling another one. 27 for 1. It's been a mixed bag for Sindh. They've won first 2 games, then lost 3 consecutive games. Then by the end of that Rawalpindi leg, they won a game against Southern Punjab. That was a good win by 6 wickets. They chased down a relatively big target, and again they're in for a chase. 164 runs in this game, still to get of 108 deliveries, and they will fancy chasing down this also. Big shot in the slot, and that's gone all the way for 6. Stand and deliver. That is what Sharjeel Khan is all about. If you ball him in his slot, he's not going to leave you, regardless if you're a Sohail Tinmir or a young rookie fast bowler.
It's going to go after you. Have a look at that. Brilliant. A typical Sharjeel Khan shot. That is a good start, although they have lost a wicket, but runs are coming. That run rate is 15 and we're into the third over. And we all know that Sindh is a huge side. They've got lots of batters in their side. It's not going to be easy for Northern. Those 15 runs will haunt them. Oh, good reply. Good reply. Yeah, that's what we were talking about. There's nothing happening from the ball. It's just poor shot by Saim Ayub. When you're in such a great touch, you got to make the most of it. Yeah, that's right. That disappointment, because you're in such a superb form. You're getting runs in every game, and here's an opportunity, an excellent pitch, and you just play a bad shot and lose your wicket. That is something to learn. 158 to get 116 deliveries. That's 4. That is classical. That is fantastic. Sharjeel Khan at his very best. When he's playing like that, it's not a good news for Northern, I tell you. Just timed it, sweetly timed it between the two fielders to get it the second boundary. Already 7 boundaries in the 2.3 overs, but they've lost a wicket. Somebody will have to sit and cover Saim Ayub's knock. He usually gives them a good start. Bad ball. He has protection there, sure, but that's taking chance. Sometimes you feel, I mean, in contradiction, this could be a good idea as well. Ball him something wide outside the off stump. He will go at it. And then fancy your chances that it lands in the lap of that fielder at deep backward point. Saud Shakil has been, shifting his number in the batting order. He hasn't really got himself that start. Or maybe you can say run a ball in everything. Or sometimes you've got like a 120 strike rate, 110 strike rate, but these are small numbers for a number 3 batter. Bit of shape there for Sohail Tanvir. Good that he's kept slip fielder for Saud Shakil. Probably realizes that, yeah, that's the footwork of Saud Shakil, not ideally for the swing bowling. That is what they realize, and they've kept that slip there because Northern would know the importance of early wickets. This Sindh side is a huge batting side with Sarfaraz, Faraz Ali, also very talented left-hand batter, Umair bin Yusuf, Danish Aziz, they all can bat. So they would fancy chasing down this total on an excellent pitch. Yeah, once again. 3 gone, 38 for 1. It would be interesting to see if Umar Amin still persists with the off spin of Mubassir. We'll have to wait and see what he decides. That's 1 wicket down. Saim Ayub, the big wicket. LBW Mubassir. Good start, 16 of just 6 deliveries. But it's the sort of a pitch where this will not justify his talent. Needed to go big. 3 overs, 38 for 1. Zaman Khan, his second appearance for Northern this season. That should be okay. Yeah. Just didn't completely interest Sharjeel to go after it. He was hoping that angling away, that the ball would get him a wide, but it wasn't to be.
I think this is a good change. 27 wickets to his name, best of 4 for 16. Not bad of an economy, 8.30. This is a good change, I tell you. Although Shinwari is also in the side. That's gone. Two bounces rather, to the boundary. It's a good change if he can bowl good. With his pace, width is trouble against Sharjeel. Keep it within the stumps so that he feels that if he misses, he can be a leg before. He's a huge candidate of that at times. Or keep it around the 5th off stump so he can chop it on. But that wide and that length, he's going to swing hard and he'll go for 4, even those top edges. He'll keep it close to his body, and then his comfort level goes down by a big amount. Yeah, on the other hand, Sharjeel Khan must not get carried away with that edge. He can take his time because they're off to a good start too. Exactly 12 is the run rate. He can take a few deliveries. There's no need of that unnecessary risk that he has to go after as Aman Khan. And you'll get deliveries like that. You'll get freebies, free runs. He's still a young fast bowler as Aman Khan. And it's so important for Sindh that he stays on the pitch, especially those first 6 overs, the circle overs, because we know what he is capable of, Sharjeel Khan. This partnership is 24 of 11. That has come in good time after losing that big wicket of Saim Ayub. You would expect that they might be on the back foot, but they haven't. The two areas where he's very good, deep point and then deep backward square leg, have been guarded by 2 men who are allowed in the power play. Umar bin Yusuf gearing up. He played well in the last game. Another way of putting pressure on Sharjeel is try to keep him at the non-strikers for a while, because Saud is struggling for form. If he consumes more deliveries, that way you can force Sharjeel to go for a shot. That's probably not there. Kingdom Valley, a royal lifestyle. You can go to their Facebook page. That is Kingdom Valley Private Limited, and you can win lots of exciting prizes, and definitely you can be the next winner. Call is for 2, but I highly doubt that Sharjeel would want to come back because the ball is already in the fielder's hands. It's 45 for 1 after 4. सिंध की रफ्तार बिल्कुल मिलती जुलती है नॉर्दर्न के आगाज से। एक विकेट गंवाने के बावजूद यहाँ शर्जील और उनके साथ सऊद मौजूद हैं। उस्मान शिनवारी आए हैं पहला ओवर करने के लिए और हवा में और बमुश्किल इस बार गेंद जो है वो हाथों से निकल गई। उछल गए थे मुबस्सिर खान, उन्हें सुनहरी मौका मिला था सऊद से अपनी टीम को छुटकारा दिलाने का। उस्मान शिनवारी ये कम नसीब रहे, पहली गेंद पर विकेट मिल सकती थी। सही तरीके से मिडल नहीं कर सके और अपनी जंप को टाइम नहीं कर सके, पहले ही उछल गए, बॉल देर से पहुंची। टाइमिंग का फुकदान था स्ट्रोक में भी और मुबस्सिर की जंप में भी। किस्मत ने साथ दिया सऊद शकील का।
मुबस्सिर खान से एक ओवर जल्दी करा लिया गया था शर्जील और साइम अयूब के सामने, ताकि जो इनके दीगर बॉलर्स हैं जिसमें उस्मान शिनवारी, सुहेल तनवीर या आमिर जमाल, उन पर दबाव कम हो सके। यहाँ देखिए गेंद इतनी अच्छी नहीं थी और शॉट उससे भी बुरा था और फील्डिंग भी खराब। कभी कभी ऐसा मंजर भी देखने को मिलता है, खराब बॉलिंग, खराब बैटिंग और फील्डिंग भी। हवा में लपक लिया इसे, लाजवाब कैच। मुबस्सिर जिन्होंने इसी ओवर में एक निस्बतन आसान कैच गिराया था, इस बार गैर मामूली अंदाज में इस गेंद को उछल कर जा लिया और शर्जील खान अब आउट होकर वापस जाएंगे। ये बड़ी कामयाबी है नॉर्दर्न के लिए। ज्यादा बेहतर टाइम किया हुआ स्ट्रोक था, लेकिन इस मरतबा मुबस्सिर की टाइमिंग भी बेहतरीन थी। एक हाथ से ही गेंद को थाम लिया उन्होंने और ये बड़ी विकेट है। शर्जील यहाँ पर इस पिच पर बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन जल्दी उनकी वापसी हो गई। सिर्फ 18 रन बनाए, 48 पे 2। उमैर बिन यूसुफ है नए खिलाड़ी, 6 मैच खेले अभी तक, 123 रन बनाए, 30 की एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट। एक इनिंग सेंचुरी जो इसी टूर्नामेंट में आई। सऊ शकील और शर्जील के दरमियान एक पार्टनरशिप की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और साइम और शर्जील दोनों ही डबल फिगर में आने के बाद, सेट होने के बाद ये आउट हुए। कुछ वक्त ज़रूर लेते हैं शर्जील इन दिनों अपना जलवा दिखाने से पहले, और गेंद के बल्ले में अब अच्छी आने लगी थी, लेकिन मुबस्सिर ने इस बार नामुमकिन को बिल्कुल मुमकिन कर दिखाया। ये टूर्नामेंट के बेहतरीन कैचेस में से एक था। उमर अमीन ने अब तक टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच लिया। नॉर्दर्न की फील्डिंग जो है वो बेहतर होने लगी है दिन ब दिन। 50 रन सिंध ने अपने मुकम्मल किए। सऊद शकील का ड्रॉप कैच। मुबस्सिर, दोनों शॉटों में फर्क ये था कि शर्जील की जो शॉट थी वो ज्यादा तेज थी और मुबस्सिर का रिएक्शन भी उतना ही तेज था। और इससे कहते हैं कि कैसी बुलंदी और कैसी पस्सी। इसीलिए क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ ग्रेट लेवलर। उसी लम्हे हिसाब किताब चुकता कर दिया। यही इस खेल की खूबसूरती है। 5 के बाद 50 पर 2। रन्स के एतबार से सिंध की टीम मतलूबा औसत से ज्यादा तेज रफ्तारी से रन्स बना रही है, लेकिन 2 विकेटें गिरी हैं। विकेटें हाथ में रखनी होंगी किसी भी कामयाब रन चेस के लिए। आप एक के बाद दीगरे विकेटें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां लग रहा है कि सऊद डेस्परेट होते जा रहे हैं और यहां पर
सिंध की टीम को मजीद विकेटें खोने से जो है इज्तनाब करना होगा। सऊद को अपना मेथड देखना है क्योंकि इस विकेट पे रन्स अवेलेबल हैं। बाउंड्रीज हासिल नहीं कर सकते तो भागकर भी आप तेज रन्स बना सकते हैं जितनी बड़ी ये आउटफील्ड है। जमान खान के आने के बाद जो सदरन की बॉलिंग है उसमें हम देख सकते हैं एक रफ्तार देख सकते हैं, एक वैरायटी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले खेल रहे थे सलमान वो ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पा रहे थे। इतना आसान नहीं होता इनके एक्शन को पिक करना और उसके बाद शॉट लगाने के लिए जाना, खासतौर पर जिस दिन रिदम में हूँ। जमान खान T20 स्पेशलिस्ट हैं। एक बार फिर जल्दी करनी पड़ेगी, दबाव में थे और मेहरान मुमताज का इस बार फिर निशाना खता गया, रन मुकम्मल कर लिया। वैसी सूरत हाल में जो फील्डर होते हैं दायरे के, उनको बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाने की ज़रूरत होती है और चौकस भी आपको रहना पड़ता है जब ये सवाल उठ रहा हो बैट्समैन के लिए कि अगला रन कहां से आएगा, तो रन आउट का मौका मिलता है। बिल्कुल मौका था, डायरेक्ट हिट पर यकीनन सऊद आउट हो जाते। अच्छा प्रेशर जमान का, पहले 2 डॉट बॉल्स की, फिर एक सिंगल पे इक्तफा किया सऊद ने। पावर प्ले के ओवर्स हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और अभी तक सस्ते में छूट गए हैं जमान खान इस ओवर में। बड़ी तवक्कुआत हैं उमर बिन यूसुफ से, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी आला बैटिंग की थी, डिस सेंचुरी स्कोर की थी रावलपिंडी में। आज सिंध के ड्रेसिंग रूम की आरजू होगी कि ये उसी फॉर्म में तसलसल लाएं, क्योंकि एक बड़े स्कोर का पीछा सिंध की टीम कर रही है और इस पिच पर मुमकिन है ये गुलाम मुदस्सिर हैं, ये 2 लेफ्ट आर्म सीमर हैं सिंध के, मीर हमजा और गुलाम मुदस्सिर। मीर हमजा सुहेल खान के साथ नहीं खेल रहे और इससे फाइन लेग के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए, स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ सऊद शकील ने 4 रन के लिए। जमान ज्यादातर यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी बात को भांप लिया था सऊद शकील ने, लेंथ का अच्छा इस्तेमाल किया। बिल्कुल सामने की तरफ हिट नहीं लग रही थी, फाइन लेग का फील्डर ऊपर था और जमान को कि यॉर्कर को पहले से भांप लिया। इस मरतबा बाउंड्री निकालने में कामयाब हुए, जरूरत थी सऊद को इस बाउंड्री की। अभी भी थर्ड मैन और फाइन लेग के फील्डर दायरे के अंदर हैं। थोड़ी देर तक हवा में रही, सही एग्जीक्यूट नहीं कर सके इस पुल शॉट को सऊद। ये बेहतर ओवर, सिर्फ 6 ही रन्स खान ने दिए 56 पर 2। स्ट्राइक पे कौन है सर? राइट हैंड है स्ट्राइक पे। सही है, सही है। क्रॉस आएगा, राउंड लेफ्ट आर्म, एक कदम अंदर। मेहरान मुमताज आए हैं पवेलियन एंड, मीडिया सेंटर एंड की जानिब से। सही है। पावर प्ले में 56 रन बनाए सिंध की टीम ने, 2 खिलाड़ी आउट हुए। रन रेट से बिल्कुल हम आहंग हैं इस मौके पर। जी हाँ, जो औसत सिंध को चाहिए है वो मौजूदा औसत से ज़ाहिर ज़्यादा बढ़कर नहीं है, इसलिए ये दोनों बैट्समैन जो हैं
समझबूझ के साथ भी अगर खेलते जाएंगे, विकेट बैटिंग करने के लिए खासी सहल है। आप स्ट्राइक रोटेट करें, खराब गेंदों का आप इंतजार कर सकते हैं। इस विकेट को देखते हुए ये गुमान भी है जो सिंध के बिग हिटर्स हैं, जो फिनिशर्स हैं, अनवर अली और दानिश अजीज, इस टूर्नामेंट में थोड़े बुझे बुझे नजर आए हैं। शायद उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो यहाँ एक विनिंग कंट्रीब्यूशन अपनी टीम को बैटिंग में दिला सकें। और यहाँ ये भी देखना है कि जो नॉर्दर्न वाहिद टीम है जो जिसको 4 पेसर्स की खिदमत हासिल है, तो थोड़ी देर तक हवा में खेला था। एक और महफूज शॉट, आमिर जमाल, सुहेल तनवीर, उस्मान शिनवारी, जमान खान, ये 4 पेसर्स पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक है। कोई भी टीम अब तक हमने 4 पेसर्स के साथ किसी टीम को खेलते हुए देखा नहीं है। ये एक और पेसर हैं जो आज पहले हाफ में नजर आए थे, आसिफ महमूद। यार शायद हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न ने बेहतर रीड किया है इन कंडीशंस को कि स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही, तो पेसर्स पर उन्होंने इन्हिसार किया, या ये वजह है कि नॉर्दर्न के पास वैसे स्पिनर्स नहीं है। ये अच्छा शॉट, इस बार जगह बनाकर खेला और मिड ऑफ के फील्डर को मुश्किल में आ लिया। 4 रन के लिए इस ओवर का अख्ताम करने में कामयाब हुए उमैर बिन यूसुफ। बड़ा उम्दा फुटवर्क और टाइमिंग का आला इम्तिजाज था ये शॉट। 7 ओवर्स के बाद 64 पर 2 सिंध। सात के बाद 64 पर 2 और पावर प्ले में अच्छी परफॉर्मेंस की सिंध की, लेकिन विकेटें 2 गिरी, शायद 1 विकेट ज्यादा गिर गई पावर प्ले में। लेकिन साइम का आगाज हस्बे मामूल बहुत ही शानदार था। मुख्तसर इनिंग जरूर खेली लेकिन खूबसूरत शॉट्स खेले। यहाँ शॉट सिलेक्शन में चूक गए। शर्जील ने कुछ देर तक इनिंग्स को आगे बढ़ाया, सऊद शकील को मौका मिला और शर्जील की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। शानदार कैच के साथ उनकी वापसी हुई। तारिक, जो आप बात कर रहे थे बॉलिंग कॉम्बिनेशंस की नॉर्दर्न की, हमेशा एक उसूल ये भी अपनाया जाता है कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स खिलाएं, और ये जो कंडीशंस हैं मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के लिए कोई फ़ायदा है या फास्ट बॉलर्स के लिए कोई इतना नुकसान है। लेकिन अगर आपके बेस्ट 4 बॉलर्स फास्ट बॉलर्स हैं तो इसी फार्मूले के तहत उनको खिला देना चाहिए। जी, और ख़ास तौर पर अगर आपके पास जो चौथा बॉलर है वो बैटिंग भी कर सकता है, आमिर जमाल में ये सलाहियत मौजूद है, फिर कप्तान का सिलेक्शन के ज़िम्मे में काम आसान हो जाता है। उमैर बिन यूसुफ से बड़ी उम्मीदें हैं। हम कह सकते हैं कि आप जो दोनों टीमों के दरमियान जो हार जीत का बड़ा फैसला है वो इनकी इनिंग्स पर होगा। अगर ये अगले 7-8 ओवर्स खेलने में कामयाब हो गए तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं नॉर्दर्न की टीम को। ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में ख़ुद को मनवाना हाल ही में शुरू किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स हैं इनके पास, ज़्यादा देर आप इनको स्ट्राइक रोटेट करने से भी बाज नहीं रख सकते। टैलेंट के बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं। वो कहते हैं कि टैलेंट उस वक्त मानी खेज होता है जब वो डिलीवर करना शुरू करे और कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशंस करें जिससे टीम की जीत में मदद मिले और उनका अपना करियर भी आगे बढ़े। यहाँ पे स्टेज सेट है इन दोनों बैटर्स के पास। मिडिल ओवर्स हैं,
काफ़ी बड़ी फील्ड है, यहाँ पे रन्स रुकने नहीं चाहिए और मतलूबा औसत ज़्यादा ऊपर जानी नहीं चाहिए। और शानदार शॉट, इस बार हुक कर दिया। सऊद शकील आज अच्छे टच में लग रहे हैं। सिंध की टीम अब पेशकदमी करने लगी है 2 विकेटें गंवाने के बाद भी अपने कप्तान के जरिए। का फील्डर स्क्वायर से पीछे ही था, लेकिन उनकी पहुंच से भी बॉल दूर थी। मारी ने बहुत जान लगाकर बॉल को इतना बाउंस करवाया, लेकिन सऊद शकील ने जल्दी भांप ली उनकी लेंथ को और उनके इरादों को। पावर प्ले में ज्यादा जोर से हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे सऊद। शायद इस मरहले पर वो भी अपना भी गेम प्लान थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और चौका, इस बार बैकफुट पर खेला। सऊद शकील जो हैं इस बार सही मानों में टाइम करने में कामयाब हुए और यही उनकी बैटिंग का खासा है। बिल्कुल जोर नहीं लगाया, बहुत ही आला टाइमिंग और प्लेसमेंट। थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया गैप हासिल करने के लिए और बॉलर की पेस का इस्तेमाल किया। बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की और बल्ले से लगते ही उन्हें अंदाजा था कि ये 4 रन होंगे। ये अच्छा ओवर है सिंध के लिए। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं बहुत तेज दौड़ लगाते हैं विकेटों के दरमियान, फ्रेश लेग्स हैं। सिंध को मिडल ओवर्स में इसी का फ़ायदा रहा है। रावलपिंडी में भी जो 3 मैचेस इन्होंने जीते, इन्हें मुखालिफ टीमों को खासा परेशान किया इनके मिडल ऑर्डर में, जहां तक विकेटों के दरमियान रनिंग का सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश लेग्स हैं, नए प्लेयर्स आए हैं और बहुत ही फिट हैं। सिंध की बैटिंग का जो पहले 15 ओवर्स का पैटर्न अगर आप निकालें तो हर मैच में तकरीबन उन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है। सिर्फ उसको जो फिनिशिंग टच है वो देने में नाकाम रहे, लेकिन यहाँ डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, जैसे मैंने कहा, शायद उनके पावर हिटर्स भी अपने जोन में आ जाएं। और गेंद हवा में रही, लेकिन गैप में गई, बाल बचे। आखिर में अपना शॉट तकरीबन चेक किया था। देखिए खुद को जो है रोकना मुश्किल हो जाता है शॉट से, जब आप पहले ही जहन बना चुके हों गेम को ड्राइव करने का। 8 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 78 पर 2। The comparison at that stage, after 8 overs, Sindh 78 for 2, Northern 76 without a loss. They're not far away, Sindh. It's just the wicket columns they need to keep in check. They're looking for second one, it's not available. Good decision to abort the run. Mehran has given 9 runs in his previous over. Sindh is gaining momentum. Runs are coming for them. Yeah, it's bound to happen. It's a good batting track. Otherwise, the wickets column, as you said, is going to be something that they need to keep an eye on. And more lies on this man on the screen, Umair, because he has to support his captain to get his eye in. Captain has a good opportunity, 21 of 14. Runs are gettable. The run rate is also just shaking hands with the required run rate, 9.5. Have to get wickets.
things can change at any point in time if you lose your concentration, like we saw Saim Ayub losing his. And on a straightish ball went with a cross bat shot. It was a given leg before. Key would be, Marina, how the spinners ball here, because they are young. Mubassir and Mehran both. And they will share 8 overs if they get all of them. Mehran will, of course, bowl his full quota. The fast bowlers, Shinwari, the senior one, they got to worry and work on how good they can be with the lengths. That'll be a boundary. Using the pace, smart cricket. No force involved, just a bit of brain. He's carrying a bit of form from Pindi, Umair. It was a blistering innings, and now this touch. It's a very good surface to bat on. Enough pace, enough room given, and he capitalized on it. It's a whole different surface to bowl. Northern probably, they can't hang on and wait for Sindh to make mistakes. You have to come up with a plan to buy wickets, otherwise. Oh, that's really good running. Reading the fielders well at the deep. 9 overs gone, Sindh 87 for 2. Five bowlers already been used. It's 2 successful, Mubassir Khan and Usman Shinwari. Well, now they have to study the weaknesses of Sindh batting lineup, where they can set a trap for them to get the wickets. Otherwise, it's a bit hard to contain runs on this surface. Big pockets where they can push for doubles and even triples. And boundaries, that's not a problem. Plenty of batting to come for Sindh. Mubassir will continue. He's got 1 success so far. Can he get another one here? One bounce. Catch it was the call, but it went very quickly and flatter. He did well to keep it within the boundary though. What I mean, he needs to put a thinking cap on where he can create avenue to get those wickets. Right now they're cruising, Umar and Saud. well bowled, shabash. I like the idea, Marina, of coming around the wicket. Tight, Just shabash. that angle to the right hander cramps him up further. Exactly that way, and then the ball, if it can straighten up, it just helps you keep him in watch. He has to work a lot harder to work the ball around square leg or mid wicket with that. He doesn't have an open stance when you speak of Umair. He's looking at the bowler just over his shoulder. Whereas for the left-hander, it's just a touch easier. That's a good thing that they are attacking stumps. That opens up probably LBW option, bold option, and have to do a bit of work for the batters. A little cautious when you're coming within the stumps. Yeah, he's lucky he found Sohail Tanveer there. Just a quicker one from Mubassir this time. Got to finish the over well. I always say that. One ball to go. Think at the top of your mark. What do you want to bowl? Boundary will be hit on a good pitch, but don't bowl a bad ball. That's more like it. It's just that excellent length. And as you said, target the stumps. So just 4 runs of the over. 91 for 2.
Amir Jamal getting the first opportunity. He's good with the slightly used ball and then the death overs as well. It's been good for Northern. 10th game for him. 3 for 27 is best. Halfway through these innings now. It's been really good, Amir Jamal, for Northern. Handy with the bat and ball as well. Managed to get wickets every now and then. This comparison of the two sides, and we're talking about it, they're going neck to neck in terms of scoring, and the wicket column, yes, maybe 2 down for Sindh. But you, just like you say, that when you chase, you know what the score is, you can calculate the chase amount, how you want to go about it. Similar is the wickets. If they are actually neck to neck in terms of score, they're not going to sit back and say we've lost 2 more wickets. They just know exactly the work is cut out. I wouldn't worry about the loss of wickets unless it's 5. That's a good shot. Trying to achieve that 9.5 run rate, and we lost 2 on the way. That's fine. You can probably slow down till over number 15 and still have those 8 wickets in hand. And since the last 5 overs for Northern only got them 53, you can accelerate and get to 70s. And Sindh has done well. They're scoring at 8.9 runs per over, picking boundaries every now and then. They've got batting to come. That won't be a worry, that wicket column. Shouldn't be a worry for them. That's how good this outfield is. Rapid, absolutely rapid. So this is looking good today. 40 of 27. It's quite evident the pressure is on Northern. Look at that, just shuffling outside off stump. He picked up the line and length very early and just timed it to perfection. Never tried to overhit it. It's going to be hard for the bowlers, no doubt about it. We just can't wait for something to happen from the Sindh batters. They have to create something. This time around to the left of that sweeper cover. Good stop there now. They'll earn a couple, but he's surely saved 2 for the side. 50 partnership this of just 37. Good one between Saud Shakil and Umair bin Yusuf. He couldn't get the runs going today. A bit of a brain fade. Not a very good shot played by Saim Ayub. You see how one good over, like from Mubassir, does it. You almost 10 runs and over required with 10 overs to go. So Northern can play around this fact that 1 or 2 good overs somewhere can push this to 12 and over. So wide is it? No, it's brushed something on the way. All they need to do right now is focus on the dot balls. Cut down those boundary option deliveries where they can, Sindh batters can go and capitalize. They need dot balls. And the run rate is pretty decent for them, 9 now per over. And when the dot balls keep on piling up, that's when they feel that they're falling behind. Sindh batters, they would definitely go after a big shot, try to craft something out of it, and can open up an avenue for Northern. 99 for 2.
That's the summary so far. Northern was 108 without a wicket losing. Then 99 for 2. Not far away when you talk about runs. Wickets shouldn't be a problem for Sindh. They've got ample batting left. They've got experience like Sarfaraz Ahmed. Faraz Ali walks in as in the playing 11. They've got Danish, Anwar, Umar bin Yusuf and Saud have been pretty decent out. On 43, Saud Shakir of just 30 deliveries. Northern on the other hand has a lot of options to move around. But the wickets, they need dot balls and then wickets to put some pressure on Sindh. Mubassir continuing her hunting for that wicket column. Swept hard and should be a 4, yep. Good start to the over for Sindh. Get their 100 on board. Very assertive in his approach. Saud Shakil moves on to 47. Just a forward press. And he knew the length was there to be swept away. And he picked up the gap beautifully, just stretching out in front. Making a good connection, extending his arms. That's one area he's really dominated. Got ample room into that leg side area. Got deep square leg, way behind square, mid wicket. There's a huge gap between these two. And that's exactly where he's exploited. Yes, yes, boy, beautiful. He'll have to pull things back, Mubassir, after being hit for a boundary of the first ball. That required run rate, yeah. That speaks a bit in favour of Northern if they can pull out a good over somewhere. Otherwise, if you have like 15 runs left in the last over, 13 in the last over, you'll take it. That can be scored. Oh, that is a bit of a playing with fire kind of shot. A lot of hard work for a single. Got boundary at the first delivery of this over. And just keep rotating strike. That's what Sindh should be looking to do. Northern maybe bring someone in. Well, boy, Bombay. तेरे से नहीं होता. आजा आजा किसका? नासिर. नासिर यार जॉब करता बाहर है भाई यार, come on. 50 up for Saud Shakil. Brilliant running. They ran the first one hard and came back quickly for the second one. That's exactly what he needed. Some runs against his names. Second 50 since December 2018. That's a long time. Kept waiting. But good signs for the captain of Sindh. His bat is doing the talking. चलो चलो. Easy, well done, boys. That's a long time, December 2018. अच्छा ओवर जा रहा है मुंबई. It's a long wait. उमर भाई आप. It's more than 3 years for a 50. Catch it is the call and it's taken. That's what they were looking for. Wow. It will happen when you're trying to go 10 and over. There will be risks that you need to take. And Umar bin Yusuf has been dismissed with 108 for 3 after 12.
ये अच्छी बैटिंग कर रहे थे उमर बिन यूसुफ और ये बड़ी खतरनाक पार्टनरशिप थी 60 रन की, जिसका खात्मा हुआ मुबस्सिर खान के हाथों। आज एक बड़ा अच्छा कैच भी लिया था इनने शर्जील का। ये बड़ी गहरी विकेट गिरने के बाद, क्योंकि फॉर्म में थे, पिछले मैच में मैच विनिंग इनिंग्स खेली हुई थी। दानिश अजीज ने अब जगह ली है उमर की। तवक्को की जा सकती है कि इस प्लेसेड पिच पर वो भी आज अपना जलवा दिखाएं। दानिश अजीज जो कि रावलपिंडी में बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नज़र आए थे। सरफराज अहमद एक और खिलाड़ी हैं, उनके भी स्टाइल ऑफ प्ले को ये पिच खासा सूट करेगी। जी हाँ, डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे उमर बिन यूसुफ। आगाज़ मिल गया था, टीम को ज़रूरत भी थी, लेकिन अच्छी बात सिंध के लिए कि उनके पास बैटिंग काफ़ी है। दानिश अजीज एक हैं, सरफराज को आना है, अनवर अली हैं, फराज हैं। रूम दिया था, बहुत जोर से मारने चले गए थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और थिक आउटसाइड एज हुआ और अपनी विकेट गवा बैठे। और राइटली सो डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि पिच बहुत शानदार है बैटिंग के लिए। स्ट्रोक्स लग रहे हैं हर तरह के, बॉलर्स के लिए मुश्किलात हैं। और अब सिंध को 83 रन अभी भी रिक्वायर्ड हैं, 10 की रन रेट है। और T20 क्रिकेट में 7 विकेट जब हाथ में हो तो आप सोच सकते हैं कि ये चेज हो सकता है स्कोर, इतना बड़ा टारगेट नहीं है। सिंध के ड्रेसिंग रूम के लिए भी ये बेहद ज़रूरी था कि सऊद शकील रन्स बनाएं, क्योंकि कप्तान अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो फिर टीम से ज़्यादा उसे अपनी फिक्र लायक हो जाती है। रावलपिंडी के मरहले में यही एक मुश्किल थी, जिसकी वजह से 3 मैचों में नाकामी का भी सामना करना पड़ा। और अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है, कप्तान आउट ऑफ फॉर्म है, तो कई बार जो है कप्तानी या आपके जो फील्ड पर फैसले होते हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। दानिश अजीज स्ट्राइक रेट अच्छी है, 126 की, 72 इनका बेस्ट है। जो एक चीज सऊद शकील की जो मुझे पसंद आई उनकी कप्तानी की, कि उन्होंने अपने नंबर को बहुत शफल करते रहे, ऊपर नीचे आते रहे बैटिंग टीम की खातिर। तो शायद उस वजह से वो जो कंसिस्टेंसी जो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे प्लेयर, सऊद शकील जैसे प्लेयर के अंदर, वो हमें शायद इस नंबर की जो शफलिंग है उसकी वजह से हमें नजर नहीं आई। और यहाँ पे अपने प्रॉपर नंबर पे, नंबर 3 पे खेल रहे हैं, और रिजल्ट आपके सामने के 52 रन पर मौजूद हैं। उनका अब साथ देना होगा। और ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, दानिश अजीज, अनवर अली, फराज, जो कि बड़ी हिट मार सकते हैं। इनको एंकर रोल करना होगा, एंड तक जाना होगा, क्योंकि ये सेट है, हुरैरा टाइप इनिंग खेलनी होगी। गेंद हवा में है और फील्डर के हाथों से ये फिर निकल गई। संगीन गलती। बाउंड्री लाइन पर जमान खान थे, जिनसे तवक्को की जाती है तो इसे कैच कर सकें। खासी लंबी बाउंड्री है, इसको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। जब बहुत ही शानदार तरीके से टाइम किया हुआ ये शॉट था, थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा टाइम हो गया। फील्डर वहां प्लेस थे, और ये खराब क्रिकेट है। ये पहली बार इस मैच में हम नहीं देख रहे हैं कि फील्डर ने कैच उनके हाथों के दरमियान से किया। 6 रन हो जाएंगे, क्योंकि बॉल उनके हाथों से निकलने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी है, और सही डिसीजन दिया एम्पायर ने। अगर आप एक सेटल्ड बैटर को इस तरह चांस देते रहेंगे तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। बल्ले की आवाज से ही तारिक भाई ऐसा लगता है कि जैसे इतनी शानदार पिच है, एकदम से बल्ले में जब लगता है जो साउंड आती है बल्ले की। ये देखिए, रूम दिया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, आइडिया ठीक था, लेकिन पहुंच गए थे, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। यहाँ अगर हम गौर से देख सकें तो जब आप कैच लेने के लिए जाते हैं तो जो कामयाबी आमतौर पर आपको उसी वक्त मिलती है जब गेंद आपके दाएं हाथ की हथेली में ज्यादा लगे बाएं हाथ की निस्बत। और वो जो
वो हथेलियों की गेंद के साथ टाइमिंग थी वो इतनी अच्छी रही नहीं जमान खान की। हालांकि इन दिनों पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग करने लगे हैं। हारिस रऊफ को हम देख रहे हैं जिस तरह की लाजवाब फील्डिंग कल उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में की। मोहम्मद हसनैन पहले से बहुत बेहतर फील्डर नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन यहाँ पे अगर इस ग्राउंड की बात करें तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्म दिन है, तो जो बाउंड्री पे फील्डर्स हैं, स्पेशली अगर आप ओवर करके गए हैं, जमान खान फास्ट बॉलर हैं, तो आपको बहुत पसीना आता है। तो यही वजह मुझे यहाँ लग रही है कि पसीने की वजह से बॉल जब वो स्किड कर गई हाथ के अंदर आने के बाद, तो यहाँ पे जो वजह मुझे लग रही है वो गर्मी और ह्यूमिडिटी है यहाँ मुल्तान में जो स्ट्रगल कर रही है। इससे पहले हमने मुबस्सिर को भी देखा कि हाथ के बीच में से बॉल निकल गया, तो शायद जो वजह है वो ह्यूमिडिटी की है यहाँ पे। एक और अच्छा ओवर सिंध की टीम के लिए जो डबल फिगर में रहा। 11 रन्स दिए हैं आमिर जमाल ने 119 पर 3। तीन विकेट्स हासिल किए अभी तक नॉर्दर्न ने, 18 रन बनाए। शर्जील खान ने, साइम अयूब डिसअपॉइंटेड होंगे, 16 रन ही बना सके। लेकिन सबसे जो गौरतलब बात है वो साउथ शकील की इनिंग है। 60 रन पर अभी खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं दानिश अजीज 2 रन पर, 119 पर 3। अभी अच्छी खासी बैटिंग इनकी बाकी है। इसमें सैयद फराज अली हैं, वो बैटिंग कर सकते हैं। आसिफ महमूद ऑलराउंडर हैं, आज उनसे भी तवक्को होगी कि वो भी हाथ बटाएं इस टॉप ऑर्डर का। तो सऊद शकील ने आज जो है फ्रंट से लीड किया है अब तक सिंध को, ये बहुत ही अच्छी खबर है उनकी टीम के लिए। और आज अगर उन्होंने कामयाबी हासिल की तो जाहिर है कि फिर उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान खासे रोशन रहेंगे। यहाँ कैप्टन इनिंग खेली है, बहुत सॉलिड इनिंग जिसे कहेंगे, अननेसेसरीली रिस्क भी नहीं लिया है बैटिंग लिए। और वो जानते हैं कि, और खुशाइन की आपने बात की तो ये भी एक खुशाइन बात है डेफ क्रिकेटर्स के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी T20 2022 में होगी, आप फॉलो कर सकते हैं DICC को फर्दर अपडेट के लिए। 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये खेला जाएगा UAE में। बहुत ही खुशाइन बात है ये डेफ क्रिकेटर्स के लिए। और शायद तारिक भाई वो जो आखिर में पुल बैक की जो थोड़ी चीजें सिंध की बॉलिंग ने, तो उससे ऐसा लगता है कि वो जो 15 से 20 रन जो शॉट हैं नॉर्दर्न, वो उन्हें एंड पे थोड़ा तंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर 15 से 20 रन एंड पे और बनाए होते, जो कि शायद बैटिंग ऑर्डर की शफलिंग की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा कम हो गए, तो वो अगर इन्हें जरूर तंग करने वाले हैं इन दी एंड। बाउंड्री का फासला ये खासा ज़्यादा है, पिंडी से ज़्यादा है। ये खुला और खाली मैदान बैट्समैनों को भी ज़्यादा मिल रहा है। उठाकर खेला, क्लियर कर जाएंगे मिड ऑफ को आसानी के साथ। सऊद शकील हालांकि रिवायती तर्ज के बैट्समैन हैं, लेकिन गैर रिवायती अंदाज से भी आपको खेलना पड़ता है। गैर मामूली जगहों से भी आपको रन्स मिल जाते हैं इस क्रिकेट में। ये T20 है, यहाँ ये अच्छी क्रिकेट है। वो जानते थे कि एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, यहाँ सिर्फ उनको पार करना था और फ्लैट बैट से खेले। और जब आप इतने सेट बैटर का कैच छोड़ेंगे तो वो तो फिर यही करेंगे जो वो कर रहे हैं, रन्स बटोर रहे हैं और अब अपनी विल पे खेल रहे हैं। यार अली, अभी आपने जिक्र किया था पसीना जो है एक मुमकिन वजह हो सकती है कैचेस गिराए जाने की। अक्सर हमने देखा है लाहौर में जब जून में जो क्रिकेट होती है मौसम गर्मा में, जून के महीने में, तो वहाँ खासे कैचेस ड्रॉप होते हैं। क्लब क्रिकेट में भी तो जाहिर है कि गर्मी एक बड़ी वजह है। फील्डर्स की वैसी एनर्जी भी नहीं रहती, ख़ास तौर पर 10-15 ओवर्स जो हैं
वो मैदान में खुले आसमान तले और आग बरसाते हुए सूरज तले गुजारने के बाद, या स्पेशली अगर आप फास्ट बॉलर हैं, ये हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि तौलिए यहाँ पे ज़रूर यूज़ हो रहे हैं और यही वजह लग रही है उन्होंने अपने गर्दन के इर्द गिर्द भी लपेट रखा है क्योंकि गर्मी है। धूप इतना तंग नहीं करेगी लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, पसीना ज़्यादा आता है और स्पेशली जब आप फास्ट बॉलर होते हैं, जब आप ओवर करके जाते हैं तो नेचुरली आपको पसीना बहुत आता है और यही वजह यहाँ पे नज़र आ रही है। स्ट्रगल करते हुए फील्डर्स प्रोफेशनल हैं, 1-2 दिन लगेंगे, सेटल इन हो जाएंगे चीज़ें। दानिश अजीज दूसरे रन के ख्वाहिशमंद हैं। सऊद खासा आगे चले गए थे लेकिन दानिश देख रहे थे। नासिर नवाज बड़े अच्छे फील्डर हैं, ताकतवर हाथ है उनका थ्रो करने के लिए, इसलिए उन्होंने खतरा मोल नहीं लिया। जहाँ बड़ा ग्राउंड है इसलिए ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है डीप के फील्डर्स को। दो थोड़ा सॉफ्ट हैंड से खेले थे लेकिन अच्छी कॉल के दूसरे रन के लिए नहीं आए क्योंकि नासिर नवाज जैसा आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग आर्म है उनका, ज़रूर अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना इस वक्त क्योंकि मैच ज़्यादा दूर नहीं गया है सिंध से भी। विकेट साथ में हैं, 7 विकेट्स हैं। सऊद शकील अच्छा खेल रहे हैं, अनवर अली हम जानते हैं बड़े हिट मार लेते हैं, उसके बाद फराज बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़राब गेंद थी और दूसरे न्योते की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं की सऊद शकील ने, जिन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया इसे फाइन लेग के बराबर से और चौके पर ख़त्म किया। इस 14वें ओवर को कप्तान ने 131 पर 3। या ये बहुत ख़राब क्रिकेट है जब आप इस तरह का फुल टॉस लेग साइड पे करेंगे और एक बैटर जो ऑलरेडी 70 पर खेल रहा हो तो आपका बचना नामुमकिन है। 131 रन, 3 विकेट्स गवा के 14 ओवर्स के बाद सिंध। कंपैरिजन की अगर बात करें तो ज़्यादा रन्स में फ़र्क नहीं है। सेम स्टेज पे 14 ओवर्स के बाद नॉर्दर्न ने 133 रन्स बनाए थे लेकिन 1 विकेट गवाई थी। सिंध ने 131 रन्स बनाए हैं 3 विकेट्स गवा के, और शायद यही वो टाइम था 14 ओवर्स के बाद वो वक्त था जब विकेट गवाई थी और बैटिंग ऑर्डर में शफल किया। जब 6 ओवर्स पड़े हों, आपके पास प्रॉपर बैटर्स हों, तो मेरे नज़दीक शायद वो एक अच्छी मूव नहीं थी नॉर्दर्न की कि आप सोहेल तनवीर को उमर अमीन से पहले भेज दें। जब 6 ओवर्स पड़े हैं, मैं मान सकता हूँ 1-2 ओवर पड़े हों तो आप भिजवा सकते हैं, लेकिन 6 रन्स भी करते हैं और वो भी सेफ नहीं होंगे तो डेफिनेटली कोच तो खुश नहीं होंगे। कैचेस काफ़ी 2 कैचेस गिराए हैं नॉर्दर्न ने, थोड़ी खराब बॉलिंग भी की गई है। ये अच्छी पिच है दानिश अजीज जैसे प्लेयर के लिए जहां पे स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, और जब आप ऐसी गलतियां भी करेंगे आसानी से रन्स मिलते चले जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे लकी रहे कि रन नहीं हासिल किया, लेकिन जरूरत नहीं थी शायद इस थ्रो की। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ी बाउंड्रीज हैं, कौन सी बाउंड्री ऑप्शंस यहाँ पे चूज करनी चाहिए बैटर्स को। मुझे लगता है कि सीधा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंजमाम उल हक इंक्लोजर है, अगर आप वकार यूनुस इंक्लोजर से बैटिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा एंड ऐसा है, थोड़ा छोटा है। ये वो हम अभी बात कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं थी। जब आप डिफेंड कर रहे हैं और अगली टीम ऑन टॉप है तो आपको एक एक रन बचाना है। हाँ, उठाकर खेला, गेंद जाएगी हाथों में। जी हाँ, और यहाँ पर नासिर नवाज जो अच्छे आउटफील्डर्स में उनकी गिनती की जाती है, उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की। आमिर जमाल थे दरअसल तसी, उन्होंने ये कैच कर लिया। सोहेल तनवीर को एक बार फिर एक ऐसी गेंद पर विकेट मिल गई जो कि बहुत आला नहीं थी। सऊद शकील 70 रन लाने के बाद वापस गए। बड़ी शानदार इनिंग्स खेली कप्तान ने, 132 पर 4।
यहाँ एक्सपीरियंस सोहेल तनवीर का, थोड़ा पेस में कमी लाए क्योंकि बहुत देर से साउथ शकील यही शॉट ढूंढ रहे थे कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अपनी विकेट गवा बैठे। 132 पर 4 सिंध। सरफराज अहमद 35 साल इनकी उम्र, बहुत ही एक्सपीरियंस है, 247 मैचेस खेल चुके हैं, 17-50 इनके नाम रहेंगे। स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, जिस नंबर पे ये बैटिंग करने आते हैं, विकेट कीपर बैटर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, एवरेज भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे रोल डिफरेंट है, यहाँ पे चार्ज करना होगा आते ही। ये क्वालिटी है सरफराज अहमद की, गैप बहुत शानदार ढूंढते हैं। और ये लास्ट विकेट जिस तरीके से आउट हुआ, एक्सपीरियंस था और काफ़ी देर से यही शॉट ढूंढ रहे थे। कैच भी ड्रॉप हुआ, सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन सोहेल तनवीर ने थोड़ा पेस को कम किया, जिस वजह से वो जो एलिवेशन जो ये ढूंढ रहे थे, एक्स्ट्रा कवर जो उन्होंने प्रैक्टिस शॉट में मारा है, वो नहीं लग सका और अपनी विकेट गवा दी। यहाँ कप्तान की सोच बुरी नहीं थी सऊद शकील की, क्योंकि जो रन बनाने की दरकार शरह है वो 10 से आगे निकल चुकी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो बाद में कैचअप क्रिकेट खेले। और फिर बाहर खाली गया दानिश अजीज का, क्योंकि अगर आपको 10.9 की औसत दरकार है तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब पार ओवर्स जो हैं वो कम खेलें। या जो चीज़ फेवर में जाती है नॉर्दर्न की, वो सोहेल तनवीर हैं, उनका एक्सपीरियंस है। और ये वाहिद बॉलर हैं जिन्हें थोड़ी सी स्विंग देखने को मिली थी अर्ली ऑन बॉल के साथ। बहुत शानदार सर्कल में बॉलिंग की, काफ़ी परेशानी दे रखी बैटर्स को। शर्जील खान को बॉलिंग जब आप सर्कल में करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से बॉलिंग करनी होती है। यहाँ पे उस तजर्बे को जो उन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल के हासिल किया है, यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए। अभी जमान खान के 2 ओवर्स बाकी हैं। स्पिनर से शायद अब यहाँ बॉलिंग ना कराई जाए, क्योंकि आखिरी 5 ओवर्स में वो खतरा मोल लेने के मुतरादिफ होगा। 2 ओवर्स किए हैं मेहरान मुमताज़ ने, और यहाँ पर मौका ज़रूर था लेकिन बैकअप करने के लिए कोई फील्डर नहीं था, इससे थ्रो करना मुनासिब ख्याल किया नहीं उमर अमीन ने। तो स्पिनर्स जो हैं वो मुबस्सिर खान और मेहरान मुमताज़ 2 ओवर कर चुके हैं। तो इससे इम्कान अब यही है कि आमिर जमाल जो हैं वो अपने 4 ओवर्स मुकम्मल करेंगे सोहेल तनवीर का। इसके बाद 1 ओवर बाकी रह जाएगा। 2 ओवर्स जो हैं वो जमान खान को करने, वो स्पेशलिस्ट हैं डेथ ओवर्स की बॉलिंग के। बेहतरीन बॉलिंग, बहुत ही एक्सपीरियंस सोहेल तनवीर। और ऐसी पिच पे अगर कोई बच सकता है तो वो सोहेल तनवीर जैसे बॉलर ही बच सकता है। अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, एक्सपीरियंस बहुत है, पेस को वेरी करते हैं, वेरिएशन है, स्लोअर बॉल बहुत शानदार करते हैं। 134 पे 4 सिंध। छह बॉलर्स का इस्तेमाल किया है कप्तान उमर अमीन ने। थोड़े महंगे साबित हुए मुबस्सिर। 10 से ऊपर की जब इकोनॉमी होती है तो आपका दिन अच्छा नहीं होता है। शनवारी विकेट जरूर हासिल की लेकिन इकोनॉमी हायर साइड पे है। आमिर जमाल जैसा आप कह रहे थे 2 ओवर वो करेंगे, मेहरान मुमताज़ 2 ओवर करेंगे, जमान खान शायद 1 ही ओवर कर सकें। देखना होगा कि मेहरान और जमान में से एक ओवर कौन करता है। यहाँ पे कप्तानी बहुत अहम होगी। या जमान खान जो है हम कह सकते हैं कि वो 2 ओवर वो करेंगे क्योंकि वो अच्छे यॉर्कर्स करते हैं। आमिर जमाल जो हैं रावलपिंडी में या आखिरी मैचेस में ये भी यॉर्कर करते हुए नजर आए थे। इन्होंने पहले ज़्यादातर शॉर्ट बॉलिंग करने के लिए जाने जाते थे। इस बार मौका है, फील्डर दौड़े दौड़े आए और कैच गिरा बैठे। उस्मान शिनवारी
जिन्होंने पिंडी में एक ऐसा ही बड़ा यादगार कैच लिया था बाउंड्री पर आखिरी दिन, इस बार खासा लो कैच लेते हुए गेंद को गिरा बैठे। जी हाँ, आइडिया ठीक था दानिश का, लेकिन शायद टाइम सही नहीं कर पाए। और इस लेवल पे आपको ये कैचेस पकड़ने होंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान का प्रीमियर T20 कप खेल रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं पाकिस्तान में। और अगर आप इस तरह की गलतियां एक सीनियर प्रो होकर करेंगे तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है यंगस्टर्स के लिए। खराब क्रिकेट यहाँ पे शिनवारी की जानिब से। कट कर दिया, लेकिन फील्डर फाइन है थर्ड मैन पोजीशन पर। यहाँ दानिश अजीज ने ये देखिए खासियत तक नीचे आ गए थे और फिर क्लैप्स कर दिया। डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे मौके पे आपको विकेट्स हासिल करनी है। और अगर आपके सीनियर मेंबर ऑफ द टीम ऐसे कैचेस ड्रॉप करेंगे तो आप यंगस्टर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। 137 पे 4 हैं सिंध इस वक्त। 2 सीनियर मेंबर सिंध के बैटिंग कर रहे हैं। सरफराज अहमद के लिए अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट रहे हैं, 3 इनिंग्स में नॉट आउट रहे हैं, रन्स करते रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूती से संभाले रखा है इन्होंने सिंध के लिए। ये अच्छा शॉट, लाजवाब, सरफराज अहमद 4 रन्स। आमिर जमाल शॉर्ट पिच गेंद किए बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकते, और सरफराज अहमद जो है जाहिर है कि इस मौके को उनने जान नहीं दिया हाथ से। यही बॉल अगर पिंडी के पिच पे किया होता तो उसकी लेंथ डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पे बाउंस था। शायद अभी उसी से निकल नहीं पा रहे हैं, यही इजी लेंथ है। और सरफराज अहमद जैसे बैटर जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार खेलते हैं, उनके लिए ये आसान शॉट है। या पिछले 2 ओवर्स में हमने देखा है सिंध के जो बैट्समैन हैं उन्होंने हमला कर दिया है, क्योंकि जानते हैं कि ये निस्बतन कमज़ोर कड़ियां हैं सुहेल तनवीर या आमिर जमाल इस बॉलिंग अटैक में, क्योंकि जमान खान के सामने इतना आसान होता नहीं है। ये PSL में भी नज़र आया था आखिर में रन्स बनाना, इसलिए उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया है इस 15वें और 16वें ओवर में ही। जब इतने विकेट्स हाथ में हो तो आपको अननेसेसरी लेट नहीं लेके जाना चाहिए मैच को। और सरफराज अहमद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, दानिश अजीज उनके साथ है, अनवर अली को भी आना है, फराज भी बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो फेवरेट सिंधी होंगे। और उसके बाद सरफराज में पोटेंशियल है कि वो इस तरीके से सॉफ्ट हैंड से खेल के सिंगल हासिल कर लें। ये कमाल की बैटिंग है सरफराज अहमद की जानिब से। बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत पर्पस से क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो नहीं बदली है वो इनकी बातें हैं, और ये बातें शान मसूद, शोएब मलिक। सेंट्रल पंजाब को बलूचिस्तान से खेलना है इस मैच के बाद। 2 बहुत शानदार टीमें आमने सामने होंगी। शान मसूद ने रावलपिंडी में नंबर 4 पोजीशन पर आकर भी खुद को मनवाया था। इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की होम सीरीज है वो उसमें ये उम्मीदवारों में से एक होंगे मिडिल ऑर्डर में। ये देखिए बाउंड्री लाइन पर ये पहले कैच गिरा और फिर एक और कैच आमिर जमाल की गेंद पर गिराया। उस्मान शिनवारी थे इस बार। जहाँ फील्डिंग का तो हम चर्चा करते रहे हैं, यहाँ पे फिटनेस का भी को देखना होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है कि फास्ट बॉलर्स हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आमिर जमाल हम देख सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रैम्प्स शायद आ रहे हो, क्योंकि रावलपिंडी में मौसम इससे बेहतर था, एटलीस्ट ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। जब मुल्तान क्रिकेट पहला मैच खेल रहे हैं, एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग बिल्ड इंसान है आमिर जमाल, लेकिन इतनी गर्मी में जब आप फास्ट बॉलर हों, स्पेशली ऑलराउंड क्रिकेटर हों, जब बैटिंग की जिम्मेदारियां भी आप पे हों, फील्डर भी आप शानदार हों, तो ऐसा हो जाना इतनी कोई गैर मामूली बात नहीं है।
एक और अच्छा शॉट, इस बार भी 2 रन्स की कोशिश है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। बाउंड्री लाइन पर हुरैरा नजर आए, पर वक्त तक गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए। ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जो डीप के फील्डर्स हैं वो टेस्ट जरूर होंगे, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी टेस्ट होगी बैटर्स की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रन्स भाग के होंगे। बड़ी बाउंड्रीज हैं, स्पेशली स्क्वायर पे। स्ट्रेट बाउंड्रीज थोड़ी कंफर्टेबल हैं, आप बड़ी हिट स्ट्रेट मार सकते हैं, लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज पे आपको भाग के लेने होंगे रन्स, और सरफराज तो मास्टर हैं इस चीज़ में। इसलिए सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटर इस वक्त गलत नहीं होगा कहना कि सरफराज अहमद हैं, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि रन्स कैसे लेने हैं। फिर क्या दूसरा रन लेने जाएंगे? जी नहीं, उस्मान शिनवारी बर वक्त पहुंच गए थे। 11 रन इस ओवर में बनाए, और ये पार ओवर था सिंध के लिए, 145 पर 4। Sindh now declaring the acceleration, and rightly so, they need it. The required run rate just piling on, 11.50 now. They need 46 of 24 deliveries. Northern, on the other hand, have been sluggish in the field. Bowlers haven't really done anything to open up an avenue and challenge the Sindh batters. If you do the comparison, Shah Faisal, almost same parallel lines both teams are going. I have a feeling this is going to go right down to the wire, because this contest is really heating up now. The final bend of this enthralling contest. Sarfraz looking to bludgeon the ball. Generally doesn't like to do that. That run rate there, and we'll have to see what options Northern use, because Northern has the resources to bowl at the death. Zaman Khan is one of them, and Zaman's contribution will be important here, because he can mix him up, he can bowl a good Yorker, and with that deceptive action, the slow delivery as well. It's been mix and match for pacers as well as for the spinners. Surface giving no assistance to the bowlers whatsoever. That's a good ball. Zaman Khan, you'll see that every now and then. He's trying to push for the second one. Always interested, Sarfaraz. That's terrific. Zaman Khan really nailing in the Yorker. Remember, he'd had third man and fine leg up for Danish. Fine leg is still up for Sarfraz. Third man has gone back. If you look at the field that he's set up, he will be looking to bowl full and straight or into the wicket. He's got 2 sweepers on the onside as well for that slower bouncer that he normally bowls. Still having a chat with Umar Amin. Long off has been brought up inside the circle. Tipping on this occasion, full toss, couldn't really put it away. That's where he'll bowl. He'll push Sarfraz to go into that leg side, got the protection there. As long as Northern doesn't concede boundaries, they would be happy with that. For Danish Aziz, now 3 sweepers going on the onside. His favourite area is mid-wicket as well. But the boundary option he has is on the offside, because there's a deep cover. He only has that one fielder that's just come into your screen on the offside. He has to beat that to get a boundary. That's up in the air, but probably will fall safely. Pushing for the second one, and the throw is not good enough.
It was a very, very slow turn there from Danish Aziz. Sarfraz was always going to get home. He really pushed Danish for the second run. He was lucky the throw wasn't straight enough. But once again, Zaman mixing it up nicely. This time a back of a length. Danish couldn't get any power into the shot. But look at that. Just barely got in. The wide throw helped him. Another good delivery. He's giving nothing away to work with for the batters. Good pace, right in the block hole, within the stumps. Making things hard. He's bowled lengths where Danish couldn't get underneath it, and he hasn't given him any room to open up the offside and take the boundary option. So this is excellent from Zaman. He would like to get out of the over cheaply and pile on the pressure. This has been a good over so far. Just 6 of it. Needs to finish well. Sindh probably hunting for a boundary. And they won't get that. Single to end the over. That's a really good over from Zaman Khan under pressure. 17 gone, Sindh 152 for 4. Equation probably getting a bit tighter for comfort for Sindh. 38 now required of 18 deliveries. Faraz is on 10, Danish on 14. They've got Anwar Ali back in hot. Faraz Ali in the part of playing 11. These two, they can go big. Lot relies on Danish Aziz in this partnership. Sarfraz will play his part. 13 and over is getting to a stage where from 1 boundary and over to 2 boundaries and over that Sindh might require. This is how modern day teams, they break down the equation in the final overs. So now probably I can safely say that Sindh needs 2 boundaries and over from here. Anything less than that, this run rate will go up. Yeah, they need a big over right now. But it's Suhail Tanveer with the ball. He's been really decent, just gave away 23, bagged 1 wicket. Probably will run away for the boundary. Some work to be done. No, the ball wins the race. Boundary of the first delivery. Sarfraz was looking for that gap for quite some time. Just a little too straight from Suhail Tanveer rather. And once that ball hits the gap, this outfield is very, very fast. One leg was up in the ring. That is the boundary that Sindh needed, and particularly at the beginning of the over, that will put Suhail Tanveer under immense pressure. Just shuffling across, he knew exactly where the fielder was. Couldn't really adjust to the line. Still third man up in the ring. One leg up in the ring. Here's a gap for a boundary behind square on the offside. But Sarfraz goes the other direction and finds the maximum. 10 of 2. This is what Sindh needed, and this is what Sarfraz has come up with. Really smart batting from Sarfraz. He's making Suhail Tanveer bowl the area to his liking. Again, shuffling again, targeting that area behind square. And Suhail Tanveer just falling into his hands. He hasn't adjusted the line with his initial movement. Also the length where Sarfraz was able to get underneath it. Not right in the block hole. The experienced man from Northern has really bowled 2 ordinary deliveries compared to the standards that he sets for himself in these death overs. Pushing for second one. He's called it loud. That's good running, really good running. Pressure is back on Northern. That's the over they needed. Sindh. You can't stop those twos. This is a huge field here at the Multan Cricket Stadium, and despite a slight stumble, Sarfraz made it very, very comfortable. Look at how
comfortably he got in. More worried about Danish, who's on his haunches once again. It's hot. The conditions are tough for these players, and when the contest is so tight, it takes a lot out of you. So you have to give credit to these players for putting on such a show. Absolute entertainment since Pindi and now in Multan in the very first game. It's a good delivery. Right on the money. It's exactly the length that Sohail would have hoped to have started the over with. Now he's conceded 13 runs. That's what the requirement was before this over started. Till 2 deliveries to go. So it can be a match turning over for Sindh if Danish can find a boundary. That's exactly what Sindh would be looking for. Now it's Danish's turn. Would love to exploit this over. Get ahead of the game. 14 deliveries, 26 to chase down. Can Sohail Tanveer redeem himself? Just a wild swing. It kept on getting tall on him. There was a boundary for the taking for Danish. Both the square fielders inside the ring on the offside. Just needed to put bat to ball. He was just looking to hit it too hard. And that's the boundary opportunity that went a bagging. Just whirled it. Wanted to go upish. Couldn't really get any connection, and you could hear Sarfraz, the sigh of disappointment. That was the boundary option. 1 to go. Can Sohail Khan finish good? His experience says a lot. Straight to the fielder. Will only manage a single. No worries there of throwing it. 18 overs gone. Sindh 166 for 4. Zaman Khan, Shinwari or Amir Jamal, these are the options when we talk about pace attack. Probably will go for them. If I was a Northern fan, I would be a bit nervous about Shinwari bowling the last over. He has a history of bowling some crucial no balls and free hits in very, very close contest. Amir Jamal is a young man. He's making a name for himself. He closed out the previous game pretty well. It's Umar Amin's call. But this penultimate over is also very important. If Zaman can save as many runs as he can for the last over, it may just ease the job. One bounce to mid-on. They are looking for the second, but a slight slip up. That'll contain them to 1. Yeah, with Shinwari, it can go either way. You have to be very careful what lines the ball. It's a good delivery. There's still plenty of maneuvering for tactics in this format. It's normally not thought of as that. But Umar Amin must have thought about preserving Zaman for the last over. Because Zaman, we've seen him in the past. He can save you 10 or so runs as well. He has that ability. But he went the other way, the skipper. Low full toss, it's travelling. Has he got all of it? No, he hasn't. Bounced the fielder, and Zaman Khan has done the work. Lack of pace really did for Sarfraz here. That slow delivery dipped at the last moment and hit him at the bottom of the bat. And obviously, long boundaries here. So he was caught inside. Sarfraz was aiming for that area. Field was well set. Didn't have to move an inch, the sweeper. And Zaman Khan celebrates in joy as this is a huge scalp. Sarfraz gone for 23. Sindh 167 for 5.
Zaman Khan, the birthday boy today. Wish him all the best for his life and future endeavours. He did some work for Northern now, creating that distance more and more from Sindh and the total. What a year this has been for Zaman Khan. Came to fame and reckoning. And if the next year is anything to go by that, he would have earned more accolades and more success in life, and we wish him all of that. For now, the job in hand is he needs to bowl 4 good deliveries, and that too against the prowess of Anwar Ali. Both the third man and fine leg are up in the ring. Straight over his head goes Anwar Ali. He's not new to these scenarios. Things are getting a little tighter for Sindh. 23 required of 9 deliveries. We're talking about those 2 boundaries per over that did come in the last over. So far none in this over, with only 3 deliveries to go. Hard lengths there from Zaman Khan. Rushed Anwar Ali. Anwar Ali hasn't been in his best hitting form, but like Marina said, he's tailor-made for these situations. If he comes good today, Sindh won't be complaining. Ball shot once again. Couldn't really find the timing now, Danish. The length is the key. He doesn't allow the batters to get underneath. Same was the case with Sarfraz. And there was lack of pace on that occasion as well. Sarfraz couldn't get the timing that he needed to clear the fielder. Straight down the throat of the fielder, and now with 2 deliveries to go, Sindh desperately need a boundary in this over. What's the options for Anwar Ali? Over cover, maybe. That there's wide open spaces there. 3 sweepers on the onside. Fine leg and third man are up. Oh, that's freebie. That's not what you want. Being a Northern captain, Zaman Khan, just a stray ball. Once he strayed in line, Anwar Ali, look, you can see the leg stump behind him. Probably Zaman went for that, but too wide, and a gift really. The fine leg up in the ring. That was the boundary Sindh was requiring for this over. Still 1 to go. Can he find another one? Northern would love to get away from this over without another boundary. Another one. Gifted runs for sure for Sindh. Back-to-back boundaries. Zaman Khan could have been a really good over. Spoiled otherwise. Wow, wow, wow. The luck is running for Sindh. Zaman would really feel hard done by. The length allowed Anwar Ali to free his arms and have a clear swing at it. And he won't care about where it went. He would care about the result. 6 deliveries to go, 14 needed. 177 for 5. .11 coming off. That Zaman's over. That did ease some pressure off Sindh. 14 required of 6 deliveries. Anwar Ali and Danish. Got some metal to prove here. Sindh could not have asked for 2 better batters to be present in the last over, because these 2 are known to be finishers. The job at hand is now within touching distance after those 2 boundaries. It was the back end of the last over, and the man with the responsibility to bowl the last over is Shinwari. Watch your steps, Shinwari. Don't overstep. 10 or less than 10 has been a comfortable win so far in this tournament. Can they pull out 14? That's a really good delivery. Will steal a single. Way outside off stump. Yorker length. That's what you would love to nail.
Superb from Usman Khan Shinwari. He went for the wide Yorker. He nailed it. He knows that Danish's favorite area is mid-wicket. He'll take some doing to hit that ball towards mid-wicket. And now he's got a different challenge in Anwar Ali. That's the advantage of right-hand, left-hand combination. Shinwari would have to come up with different plans. Umar Amin, look at the field. He's got the third man back. That may suggest that he still wants to go for that wide Yorker. As I speak, third man has been brought up inside the ring. I think that could have been a good option. Keep the third man back. Again, ball way outside of stump. Keep the ball away from him because he can go straight, he can go mid-wicket. Looks like he's still ball wide because there's a cover deep, extra cover and long off. 3 sweepers on the offside. Oh, we'll have to check that. But it's been put away over the boundary. That's what they're asking for. Is it a no ball or not? But he has dispatched it for a maximum. Anwar Ali was eyeing that area because Usman Shinwari had packed out offside. There was space, but Anwar Ali moved right across his stumps. The height is a question. It's marginal. Umpire will have to make a call on that, which Northern may not like, because on the first instance it looked like it was pretty high. No signal just yet from the umpire. Seemed like a no ball, but they're going otherwise. He's really asking for it, and that, anyway, they did got a maximum. 7 just now required of 4. Oh, that'll be a wide. More runs coming on Sindh's way. Not a good start from Shinwari. Yeah, that wide Yorker ploy, Anwar Ali has come up with a tactic against it. He's showing him all his 3 stumps. Look at that high full toss. That was clearly above the waist. You have to say that. Sindh could feel their heart done by. Anwar Ali is tall, but that ball was still high enough. But incredible stroke to get so much bat from that height. Shinwari, they need dot balls for sure. 6. It's not going to be a problem for Anwar Ali. Again a full toss. There's a fielder there, he's settling in, and it's gone. Anwar Ali has to take the walk. Zaman Khan managed to get another one. Whereas the fielder, Anwar Ali, was eyeing for the same result as he found earlier in the over. This time, didn't get as much bat on it. That wasn't high enough. It was just knee height. Anwar Ali could have done better with it. He's really disappointed with himself. But that one maximum has really got Sindh in touching distance. He's gone for 15 of just 5 deliveries, 185 for 6. Faraz Ali walks in to join Danish. 6 required from 3. He has some work. He's on the non-striker though. He's back in T20 after 8 years. That's a long time to wait. Not all drama is lost. Usman Shinwari is making things a little bit interesting here for Northern. Like I said, Usman Shinwari has been on the receiving end of some rough treatment in his last over. Got a huge slice of luck with that second delivery of the over. Despite it going for 6, he got away with that no ball, but 6 of 3. That's aerial. Where will it land? Safely. We were looking for a second one, but no. They had to abort it. That is sloppy. That is very sloppy from Sindh. There should be better game awareness. There was 2 all over it as we watch Anwar Ali. Knee height full toss. There was fielder behind square. Found him to perfection. Few yards either side of him, and it would have been game Sindh.
Such are the small margins here. Yeah, just allowed that full toss to come close to his body and really get the power behind it. Right, so 5 needed of 2. That's Apesh. They'll run hard for it. Probably will get a second one. That's good running. Usman is struggling. 3 needed of the last delivery. Wow, it has come down to the wire. This contest has been riveting from ball 1, and now all hinges on the last delivery. Are we looking at a super over, Shah Faisal? Just giving some room. I'm disappointed they don't have that option. Check with Farhan Nisar, because league stages, I think they will share the points, but so super over could still be a possibility. 3 required of 1 delivery. Can they manage a boundary or at least 2? What's the boundary options? There's extra cover. Anything over that fielder or through that field could be a boundary. Fine leg is up. Third man is up. Will he go for that audacious ramp shot? Or will he go for cow corner? 1 perfect Yorker. That's what Shinwari needs at this stage. 1 perfect delivery. It's the length. They're pushing hard. They're pushing hard. And it's not going to be another one. Or is it? Oh, that's Direct hit. Wow. He'd lost his bat in the process. He had to dive. And the ball was on the bounce. And it hit the stumps. Was he short? The way Northern are celebrating, I think they've got their man and the victory. This is incredible drama here at the Multan Cricket Stadium. You see Danish is down at the far end, Shinwari is down. Now the action shifts to the third umpire. That's a throw. Oh, that's a big out. They're going to pay for it. He wasn't in the frame. And can you believe it? Can you believe the luck Northern's having? From the deep, the throw comes in. No one would have imagined that it will hit the stumps. Woodwork being stumbled. And Northern, by the finest of margins, have pulled this one just by 1 run. Well, the closest finish so far in this season. We've had some close finishes, but none better than this one. And Faraz, who lost the bat in the process, he had to dive, but he was miles out because that throw hit direct from the deep. I have to say it was incredible from the man at long off. Northern winning by 1 run. What a game of cricket this has been. Northern has won their 3rd match with closest of margins from 3 or less than 3. And this has been a miracle. Then would definitely be disappointed. They were just 1 hit close. But look at that. It's the hard length hitting. They pushed hard, but the throw was just immaculate. Look at Rohail Nazir. He was trying to get to the throw, but he didn't need to. And Faraz, who lost the bat, that was a slow turn from him as well. He could have done better there. But that's Umar Amin celebrating the skipper, who's been a live wire in the field for Northern. But look at Sindh. They thought they had this in the bag when Anwar Ali had hit that 6 earlier in the over. Not to be. What a match to start off. Multan leg. Northern and Sindh locking horns. And by the finest of margins, that's just 1 run. Northern has pulled it off. That's how things unfold for Sindh. A brilliant 70 by the captain Saud Shakil. The openers did have a start, but couldn't really capitalize. Danish Nora on 19. 20 from Umair. Sarfraz Ahmed scoring 23. And rest, they all could manage 189, falling 1 short. The margins are so fine. You look at Danish's innings, 19 of 19,
You think he could have done better because he was playing in the last 5 overs, and run a ball surely is not good enough at that stage. But just 1 run was the margin, and Northern's bowlers really held their nerves, especially Zaman Khan probably was the pick. He didn't get many wickets, but the overs he bowled towards the end, 1 for 31. Mubassir Khan, 2 for 31, was amongst the wickets. So was Shinwari, who also did a fabulous job in that final over. He got lucky, you have to say that, but you go with the flow and you deserve your luck, whichever comes your way. Amir Jamal, 3 for 30, was expensive today. It's been a superb game of cricket today here at Multan Stadium. Openers walked in, was a bit of work to be done. Saim Ayub and Shurjeel started off really well, timing those perfect lengths into the boundaries. Saim always very assertive in his footwork. Glorious drive. That was the moment. Mubassir with the first win for Northern. All runs coming in a good momentum from Sindh batters. Looked like Northern were pushed on the back foot. Shurjeel with some big blows. Looked like that he may continue scoring a big run here. Few edges flying here and there. Wasn't really good bowling from Northern at the start. This was a drop chance by Mubassir. But he redeemed himself with a brilliant take. One-hander. That had some shift towards Northern. He managed to get runs. Saud Shakil, brilliant throughout his 70. Took on the bowlers. Showed display of his stroke work. Saud continued with his merry way, pounding boundaries regularly. They had to do that to keep up with the rate, and they did for most part. Umair bin Yusuf lost his wicket. Saud played blinder, but he couldn't see it through till the end. So you have to say the time they chased really nicely. Loss of wickets didn't slow their run rate. Always up with that run rate. Shinwari's drop could have been costly. Sarfraz played a breezy knock. Found the boundaries at the right time for Sindh, especially that Sohail Tanveer over where he found a boundary and a 6, but failed to do so against Zaman Khan, whose pace and guile was too much. Anwar Ali played a cameo, 15 of just 5 deliveries, got lucky on that occasion. But that boundary, well, Sindh will think that was the moment. Anwar Ali couldn't repeat the feat against Shinwari. And it all came down to that final delivery where Faraz lost his bat halfway and he lost his stance. Direct hit. Northern could not believe. They were ecstatic in joy. Commiserations with Sindh. But what a fantastic game of cricket. The first game that the victory margin has been just 1 run since the new structure came in a few years back. So this is probably a cliffhanger that everyone who saw it here will remember. 190 for 4, plays 189 for 7. Plenty of good performances, but in the end, the telling difference was Herrera's 86 and 2 wickets of Usman Khan Shinwari, who bowled the final over of the game. Northern bagging another victory, and that's how the teams are sitting. That's the point table. Khyber Pakhtunkhwa right on top. Northern gaining few moments. They've come on 4th, and Sindh is still on 2nd after this loss. We'll take a break now, and we'll join you with the post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of Match 17, and this was Sindh versus Northern. What a game we've had. The margin of victory, just one run. Both the teams fought hard and eventually one of them ran away with 2 points, and it was Northern today who prevailed. And what a thriller we've had in the first game here at the Multan leg. Before I bring in the player of the match and of course the captains, I'd like to welcome our guest, Mr. Abdul Razak. He's head coach Central Punjab, former test cricketer. We all know him. Thank you for joining us. And Mr. Mohammad Noman Ashraf, he's sales executive, Kingdom Valley. Now I'd like to call upon a player who's hit 13 boundaries and a 6 today. He scored 86 of 52. Brilliant knock. And he's the Kingdom Valley player of the match, Mohammad Huraira. He'll receive 25,000 rupees cash from Mr. Noman Ashraf first. And Abdul Razak will hand him the Kingdom Valley player of the match trophy for his brilliant 86 of 52. Huraira, we had a bit of a chat jab innings khatam hui thi, and we spoke about how you went about with your innings. But tell me, when you were given the opportunity to open today, so you took it up with both hands. What did you see out there before the match on this pitch? Runs were readily available and you read it right? या एग्जैक्टली पिच बहुत अच्छा था और उसमें जहाँ पे भी आपके शॉट्स को वैल्यू मिल रही थी, सो आई जस्ट हैड दैट इन माइंड. और जब भी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि आई लुक मोर फॉर स्ट्राइक रोटेशन, और जैसे ही बॉल आगे पीछे हो तो मैं उसको बाउंड्री मारने की कोशिश करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह इट केम ऑफ. टीम मैनेजमेंट कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पावर प्ले में अटैक करना है या आपके पास अपना डिसीजन पावर था कि आप देखें हाउ यू वांट टू गो अबाउट विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी द चांस, एंड देन आफ्टर दैट कोई इस तरह का प्लान नहीं था, बस इट वाज जस्ट दैट कि इस विकेट अच्छा है, बहुत अच्छा पिच था, और जस्ट प्ले योर शॉट्स और इस पे आपको शॉट्स को वैल्यू मिलेगी. समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लेयर्स लेबल होते हैं सर्टन फॉर्मेट्स के लिए. आपने क्या टेक्निक्स में अपने कुछ इम्प्रोवाइजेशंस की हैं टू कम इनटू द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट एंड प्ले द वे यू डिड कंपेयर टू द लॉन्गर वन? जी बिल्कुल, आपको माइनर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जैसे ही आपका फॉर्मेट चेंज होता है. आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आप ज़्यादा स्ट्राइक अच्छे बॉल्स को, यू कैन नॉट हिट 6 एवरी बॉल इन T20 ऑल्सो. सो अगर आप अच्छे बॉल्स को आप सिंगल करते हैं तो आपको लाजमी बैट बॉल मिलता है, बिकॉज द बॉलर इज़ इन मोर प्रेशर दैन द बैट्समैन. सो जस्ट यही होता है कि बस उसी जो 19-20 बॉल है उसको जो है उसको बाउंड्री लगाने का होता है. चलिए, वेल प्लेड. एंजॉयड योर नॉक एंड हैव अ गुड टूर्नामेंट. थैंक यू. Mohammad Huraira, the Kingdom Valley player of the match. Now I'd like to call upon Saud Shakil, captain Sindh, will have a few words with us. ऐसे गेम में हार्ड टू पिन पॉइंट होता है कि कौन से एरिया को मैं देखूं, कहाँ हुआ. 1 रन का मार्जिन था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें आपने अच्छा किया था बॉलिंग के साथ. लग रहा था 200 क्रॉस कर जाएंगे, तो यू वर प्रीटी हैप्पी हाफ वे स्टेज की. नहीं, ये तो गेटेबल है 190. हाँ, ऑब्वियसली जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ था वो बहुत हुरैरा बहुत अच्छी इनिंग खेला. वहाँ पे एक वक्त ऐसा लग रहा था वो 200 टच कर जाएंगे, लेकिन जहाँ हमने उनको 190 पे रिस्ट्रिक्ट किया तो थोड़ा सा मोमेंटम वहाँ की तरफ आया था. लेकिन जिस तरह मेरे पास बैटिंग में डेप्थ थी, मुझे था कि 190 इजीली गेटेबल है. आपने टॉस पे कहा था कि दोनों चीज़ों के लिए अवेलेबल है, बॉलिंग भी हो सकती है, बैटिंग भी यहाँ पे अच्छी होगी, लेकिन कहीं ऐसा लगा आपको कि यहाँ पहले बैटिंग करना इतना बुरा आइडिया नहीं था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया. मेरी स्ट्रेंथ मेरी बैटिंग थी, तो मैं उसको बैक कर रहा था फुली. और पिच ने अच्छा खेला, पहली इनिंग में भी अच्छा खेला, इवन लास्ट तक पिच बहुत अच्छा खेल रहा था. ओवरऑल आपकी टीम परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन थोड़ा पैचेस में चल रहा है. आप लोग स्टार्ट बहुत अच्छा किया, फिर बीच में कुछ मैचेस आ रहे हैं, बट यू स्टिल हाफ विन द पॉइंट्स टेबल. बट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ अ मैच? हार हुई है, लेकिन 1 रन का मार्जिन हो, यू कैन से कि फाइट थी. मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तो हम मैच जीत ही गए थे. एक बैड डिसीजन था मेरे ख्याल में अंपायरिंग की तरफ से, तो उसकी वजह से हम शायद मैच हार गए. ऑलमोस्ट वरना मैच जीत ही गए थे. चलिए, गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Call Umar Amin, the winning captain of Northern. We'll have a quick word with him as well before we get into the second match of the day. उमर, आगाज बहुत अच्छा मिला था. कहीं आपको लगा इनिंग्स के एंड में कि कहीं 15 रन और हो सकते थे इस पिच पर? यस, आई थिंक बिल्कुल. लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा इस तरह के मैचेस में बहुत दफ़ा होता है कि जब आपका ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिले. इसी तरह हमारा साउथ पंजाब के खिलाफ जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भी उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, लेकिन बीच में आके वो थोड़ा डिप कर गए थे. तो बहुत मुश्किल होता है नए बैट्समैन के लिए जाके उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करना जिस मोमेंटम से आपके ओपनर्स या ऊपर वाले टॉप ऑर्डर अगर आपको अच्छा स्टार्ट दे दें. तो मैं अभी सऊद से भी यही बात कर रहा था कि एज अ कैप्टन 1 रन के मार्जिन से अगर आप जीते तो बड़ा मुश्किल होता है ये देखना कि कहाँ पे हमसे कुछ गलतियाँ हुई, कहाँ बेहतर हो सकते हैं, बिकॉज एवरीवन फॉट हार्ड. बट अगर आप इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करें
कहीं लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होगा? आई थिंक वो जो आपने पहले मेंशन किया है, अगर मैं बहुत ओवर क्रिटिकल हूँ तो फिर आई थिंक वही जो बैटिंग में एक थोड़ा सा डिप आया था ओपनिंग स्टैंड के बाद, वी शुड हैव गॉट ओवर 200 रन्स ऑन दिस बैटिंग पैराडाइज। लेकिन उसके अलावा आई थिंक क्रेडिट मैं दूंगा बॉलर्स को कि हमने वी स्टक टू आवर प्लान्स थ्रू आउट द इनिंग्स। हम लोगों ने एक जो प्लान किए हुए थे उस पर हम लोग रहे और जिसने पे ऑफ किया हमें एंड पे। कुछ डिसीजंस आपके अच्छे हुए, हार्ड डिसीजंस ने, मे बी हसन नवाज नहीं थे, आज आपने हुरैरा को अपॉर्चुनिटी दी ऊपर। जी बिल्कुल, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह हुरैरा ने अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल की है और उसने प्रूव किया कि वो इस फॉर्मेट में अच्छी लंबी इनिंग्स खेल सकता है। इन द एंड 2 points count, well played. Thank you very much. Northern wins this match against Sindh. That's match 17. That's all from the presentation. More action will unfold at Kingdom Valley National T20. It's Balochistan taking on Central Punjab, match 18, and we'll join you 1:40 from Multan Stadium.